warm good morning to all the dignitaries present here. Today is the second day of Ashtalakshmi Sant Vichar Sammelan. Yesterday we have completed the first day of the Sammelan. The Ashtalakshmi Sant Vichar Sammelan, hosted at Agartala, Tripura by Honorable Deputy CM, Government of Tripura, Shri Jishnu Debbarmaji, is an attempt to identify, celebrate, and have a nuanced dialogue about the Sanatan, indigenous, and folk wisdom of the 7 states of the northeast of India and Sikkim, whether as written, literature, oral traditions, or even expressed through music, dance, or theatrical forms. From the modern to the classical to even ancient history, the Kamrup Kshetra has been a melting point of cultures, ideas, and the identity of India. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, rightly conferred the title of Ashtalakshmi on the northeastern states of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Sikkim, and Tripura, invoking both the number of states and the tradition of worshipping the Devi. Coming to today's program, this is academic session 3. To begin the session, I would like to ask Shri Madan Mohan Goswami ji to felicitate Shri Shivanath ji Maharaj, and I would like to give a short introduction to Shivanath ji Maharaj. Right now, Shivanath ji Maharaj is from Odisha, and he is the founder of Yogashram Shang. This Yogashram Shang is right now very active in Northeast, and he is the head of Nath Sampradaya of Northeast region. He is the follower of Sri Sri Gorakhnath ji. I would like to request Madan Mohan Goswami ji to felicitate our Shivanath ji Maharaj. Ashtalakshmi Sant Vichar Sammelan. This Sammelan has been organized jointly by Amarvani Events Foundation, Tripura Tourism, and Indus Moon Private Limited. Today's session, to begin with, the topic of the session is Challenges Before Faith and Traditions of Northeast Bharat. It includes the Teerth Yatra and tourism potentials of the state. Northeast India is one of the most culturally diverse areas of the world. It is home to over 200 tribes, including unique and fascinating features. Surrounded by hills and beautiful rivers, these states fall in the category of Eastern Himalayan ranges and Patkai Naga Hills, along with Brahmaputra, Barak River system of Valley Plains. The session, I would like to welcome our moderator for this session, Dharmaguru, Sri Gautam Mishra ji. I would like to give a short introduction of him. Dharmaguru Sri Gautam Mishra ji, their parampara is 300 years old. His ancestors gives Diksha. His father and his grandfather, his Nana ji, they were all involved in giving Dikshas. They all have migrated from UP, Bihar and Jharkhand, and their maternal grandparents, they have migrated from Brahmanbaria, Bangladesh, and they have migrated to Tripura at the time of partition. Their prayer system is Manasik Puja. He will brief about what is Manasik Puja. Manasik Puja is a puja or a form of diksha or worship where money is not required. As their followers, maximum number of followers he has, they belong from very poor families and all. So they believe in such a system of diksha where money is not required, only worship is required with wholeheartedness. He is giving dikshas in states of Tripura and Assam, mainly Karimganj, Patargandi areas. So to begin with the session, I would like him to give a short introduction about Manasik Puja. I would also like to welcome the other scholars who are going to be the speakers of this session. First, I would like to invite Sri Sandeep Kabishwar ji from Aloka, Maharashtra. He is right now, he is working as a state, he worked as a state organizing secretary of Arunachal Vikash Parishad. He has also worked as Northeast Zone organizing secretary of Kalyan Ashram. He is now serving as All India Joint Organizing Secretary of Akhil Bharatiya Vanvasi Kalyan Ashram, headquarters Guwahati.
Next, I would like to welcome Sukhdev Sharma Hanjamam, MSW PhD. He is formerly head Department of Social Work, Indira Gandhi National Tribal University, Regional Campus, Manipur, Makhang Kangpoi District, Manipur. He completed his PhD from School of Social Work, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, and postdoctoral from University of Florida, USA, as Fogarty International Center Fellow. He is one of the editors of the journal Mekal Insights, published by Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak. He is also the life member of Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, New Delhi, Northeast Indian History Association, and Manipur Historical Society. He is the convener of Intellectual Forum of Northeast Manipur, and his latest author book is Unsung Anglo-Manipur War Heroes at Kalapani as part of India at 75 series. His latest edited book is Vaishnavism in Manipur, published by Concept Publication, New Delhi. Welcome, sir. Next, I would like to welcome Ram Niranjan Desai. Oh, sorry, Rami Niranjan Desai. Rami Niranjan, it's a printing mistake, ma'am, sorry. Rami Niranjan Desai studied anthropology of religion at King's College, London. Since then, she has spent over 14 years studying the northeast region of India, traveling to some of the most difficult areas and living for a number of years in the region. She has also interviewed some of the most feared insurgent groups that have been active and has authored a number of white papers and edited volumes on the same. She is presently a consulting editor at Global Order. Welcome, ma'am. Next, I would like to invite Dr. Atul Debburma, present MLA, Government of Tripura. He is a doctor by profession, child specialist, worked in Delhi government as medical officer, also graduated in law, has written books, novels, stories, and translated many books in Kokborok. One of them is Bhagavad Gita, founded English medium school, Subrai Vidya Mandir. Welcome, sir. I would like to welcome all the dignitaries here on the dais. And next, I would like to request Dharam Guru Shri Gautam Mishra ji to give an introduction about it, Manasik Dharam. मैं माँ त्रिपुरा सुंदरी की पुण्य भूमि, बाबा 14 देवता के पुण्य भूमि और माँ कसबा काली की पुण्य भूमि और उन शक्तिशाली, वैभवशाली, समृद्ध राजाओं के कर्म भूमि जिसको कभी कोई आक्रांताओं ने अपराजित नहीं कर पाए, उनको प्रणाम करता हूँ। आए हुए देवियों और सज्जनों और गुरुओं के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम मैं माँ त्रिपुरा सुंदरी के लिए एक मंत्र का जाप करूँगा। इसके बाद अपने मानसिक पूजा के बारे में बताऊँगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मानसिक पूजा, आप सभी लोगों ने जो गुरु लोग बैठे हैं मेरे समक्ष, नारद पुराण में आप लोगों ने सुना होगा। मानसिक पूजा यह है जिस प्रकार हम प्रभु को अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं। प्रभु भाव के भूखे हैं, प्रभु को कुछ नहीं चाहिए। मानसिक पूजा में मान लीजिए कि किसी को शिव जी का पूजा करना है, तो हम ये बोलेंगे कि आप लोग जो मेरे शिष्य आएंगे जो मानसिक पूजा करने, वो सभी लोग अपना आंख बंद कर लें। अभी भी कुछ लोग चाहें तो आंख बंद करके इस प्रार्थना को कर सकते हैं। उसमें हम सर्वप्रथम ये बोलेंगे कि आप लोग मन ही मन शिव जी को प्रार्थना करिए और आप ये महसूस करिए कि आप गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। गंगा जी में स्नान करने के पश्चात आप सोने के 2 घड़े में जल ले रहे हैं। जल लेकर जो भी शिवलिंग में आप जाते हों, आपके घर के आसपास वो शिवलिंग होगा, उस शिवलिंग में आप जा रहे हैं। हम लोग काशी विश्वनाथ के लिए करते हैं ये प्रेयर। आप शिवलिंग के समक्ष जा रहे हैं और जाने के पश्चात शिवलिंग पर जल अर्पण कर रहे हैं और मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं कि हे शिव जी,
आप मेरा ये जल स्वीकार करिए। सब कुछ मन में सोचना है। उसके पश्चात आपके पास बेलपत्र रखा है, आप शिव जी को बेलपत्र अर्पण करते हैं, मन मन में सोचना है। इसके बाद दुग्ध रखा हुआ है, उस दुग्ध से आप शिव जी को स्नान करा रहे हैं। दुग्ध स्नान के बाद आप दधी स्नान करा रहे हैं, तत्पश्चात मधु से स्नान करा रहे हैं। अब एक चांदी की कटोरी रखी है, उसमें सब कुछ लेकर आपने थोड़ा सा प्रसाद के रूप में रख दिया है। फिर से गंगा जल से स्नान कर रहे हैं। अब गंगा जल का स्नान के बाद उनको दुग्ध स्नान हो रहा है। फिर से गंगा जल स्नान के पश्चात उनको भस्म लगाइए, फिर चंदन लगाइए, फिर भांग का प्रसाद चढ़ाइए और ये मन में सोचिए कि जो भी सबसे अच्छी मिठाई की दुकान आपके घर के आसपास आपके शहर में हो, उस मिठाई के दुकान से ले आए हैं, मिठाई प्रसाद चढ़ा रहे हैं प्रभु को। मन ही मन सब कुछ सोचना है। इसके पश्चात मैं इसको थोड़ा विषय को छोटे में बोल रहा हूँ। इसके पश्चात आप लोग जल चढ़ाने के बाद उनको पुष्प भेंट करिए और माला चढ़ाइए। माला चढ़ाने के बाद श्रृंगार पूरा करिए, वस्त्र चढ़ाइए और अब यह महसूस करिए कि माँ पार्वती, गणेश जी और उनका पूरा परिवार, कार्तिकेय जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, सभी लोग आ गए हैं। सभी लोग आपके समक्ष बैठे हैं और सब मुस्कुरा रहे हैं। अब आरती आप शुरू करिए। घी का दीपक ले लिया आपने और सभी का दीपक से आरती कर रहे हैं। सभी आप लोगों से बहुत प्रसन्न हैं। अब आपने ये सोचा कि आपके मन में कुछ है। जैसे हम ये बोलते हैं कि आपके पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको नौकरी मिल जाए। कोई ये सोचता है कि मेरा बच्चा शैतानी कर रहा है, वो ठीक हो जाए। कोई ये सोचता है कि मेरी बिटिया का विवाह हो जाए, उसको अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा वर मिल जाए। तो ये सब सोच रहे हैं और यह फिर आप ध्यान में सोचिए कि प्रभु शिव जी आपको हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं कि हाँ, आपका यह कार्य हो जाएगा। माँ पार्वती हाथ उठाकर यह बोल रही हैं, गणेश जी यह बोल रहे हैं। तत्पश्चात आप धीरे धीरे आँख खोलिए। इसको आपको लगातार प्रैक्टिस करना है। हम लोग इसको प्रैक्टिस 1 घंटे के लिए करते हैं। यह मेरे पूर्वजों ने इसलिए तैयार किया था ताकि जो गरीब से गरीब लोग हैं उनका भी अधिकार पूजा का होता है, ताकि आडंबरों से छुटकारा मिल सके और लोग दूसरे धर्मों के प्रति आकर्षित ना हो सकें। कहीं कहीं यह होता है कि पूजा में बहुत पैसे की आवश्यकता होती है तो वह पूजा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए चाहे वो गरीब हो, उसके पास कुछ भी नहीं है, वह भी यह पूजा कर सकता है। यही हमारी परंपरा है, यही हम करते हैं। घरों में जाके हम रहते हैं और कई घरों के लोगों को बुलाकर अपने यहाँ सभी लोग एक घर में आ जाते हैं, वहाँ पर उसको उठान पूजा बोलते हैं। यही हमारा कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir. Now I would like to invite our first speaker, Sri Shandeep Kavishwarji, to have a few words. उपस्थित सभी संतवृंद, मान्यवर, सभी माता बहनें, सबको नमस्कार। जो विषय दिया हुआ है चैलेंजेस का नॉर्थ ईस्ट की फेथ एंड ट्रेडिशंस पर, एक तो चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपने नॉर्थ ईस्ट की जो परंपरा है, जो धर्म संस्कृति है, उसको जिस ढंग से नैरेट किया गया है, उस नैरेटिव्स को बदलना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अभी तक नॉर्थ ईस्ट की धर्म संस्कृति परंपरा या उसके जो जीवन मूल्य है वो लिविंग ट्रेडिशंस है, ऐसा नहीं कि डेड हो गए हैं। लेकिन नैरेटिव ऐसा सेट किया गया कि नॉर्थ ईस्ट पूरा बदल चुका है, नॉर्थ ईस्ट ने अपने रूट्स को खो दिया है और नॉर्थ ईस्ट अब भारत की सनातन परंपरा से कट गया है। ऐसा एक नैरेटिव सेट किया गया और उसमें हम फंसते गए। जैसे एक कुछ दिन पहले एक वीडियो में देख रहा था, एक अफ्रीकन लेडी का, बहुत फेमस सिंगर है, वो बता रही है उस वीडियो में, द कंकरर राइट्स हिस्ट्री, दे केम, दे कंकर एंड दे रोट। फिर वो आगे बोलती है
now you don't expect people who came to invade us will write the truth about us. They will never, because they have to prove their invasion, or they have to justify their invasion. We never write our history. The white man came and they wrote our history. फिर वो आगे बोलती है कि nothing, in fact, you know nothing about anything, about any place in this world before, until the white man enters there. When the white man enters and he wrote, then only you come to know. And वो ridiculously मतलब एक बोल रही है, वो बोलती है nothing lies before the white man came there. The white man comes and he say, poof, I have discovered you, now you exist. तो ये हमारी कहानी है सबकी. हमको भी ये लगता है कि बाहर के लोगों ने आकर हमारे बारे में जो लिखा वही सही है, उसके अलावा कुछ था ही नहीं हमारे पास. तो नॉर्थ ईस्टर्न पीपल्स के बारे में, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में ये हमेशा लिखा गया कि नॉर्थ ईस्ट के लोग, जैसा कल आया था एक विषय कि प्रकृति पूजक है तो क्या है, तो पिछड़े हुए हैं. इनका कोई धर्म नहीं, इनकी कोई संस्कृति नहीं, इनका कोई धर्म ग्रंथ नहीं, क्योंकि बताइए कहाँ लिखा है. तो वो उसमें वो भी बोल रही है कि हमारी ट्रेडिशन हमको ओरली हैंड ओवर हुई है सदियों से. हाँ, हमने लिखा नहीं या लिखा नहीं गया, ये दुर्दैव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई परंपरा नहीं, हमारा कोई धर्म नहीं, हमारी कोई संस्कृति नहीं, हमारे कोई जीवन मूल्य नहीं. वो ओरल ट्रेडिशन थी और बहुत रिच थी, वो है आज भी, और यही हुआ है. इसलिए आज हमको भी ये लगता है कि अरे ये बताना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट की ट्रेडिशंस पर चैलेंजेस क्या है. तो चैलेंज यही है सबसे बड़ा कि इस नैरेटिव को हमको चेंज करना है, इसको रिवर्स करना है. वास्तविक कितनी रिच कल्चरल हेरिटेज हमने पाई है नॉर्थ ईस्ट ने, ये हम सब जानते हैं. नॉर्थ ईस्ट क्या, पूरा सनातन संस्कृति ने. यहाँ हम बड़े बड़े वेदों के वाक्य जब बताते हैं कि माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः, ये जब बताते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में ये बोलता कोई नहीं, लेकिन करता हर रोज है. जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, हम बोलते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब जगह वो परवेडेड है, ऑल परवेडेड. तो नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति जब शिकार के लिए या नदी में मछली मारने के लिए जाता है या पहाड़ पर चढ़ता है, तो मैं अरुणाचल में था 15 साल, तो मैं गया एक बार उनके साथ कि क्या करते हैं. तो निशी ट्राइब है, उनके साथ गया, न्योपिन करके एक चाइना बॉर्डर के पास विलेज है. तो चलिए भैया आज शिकार करने जाएंगे, चलिए मैं भी चलता हूँ. तो साथ में चावल, थोड़ा सा बॉईल करने के लिए सब्जी, ऐसा लेकर निकले. 2-3 दिन रहना है जंगल में. तो पहाड़ चढ़ने में, तो चढ़ने जा रहा था, तो उसने कहा रुको रुको भैया. वो अपने पीछे से भात निकाला, उस पहाड़ के वहाँ रखा, फिर उसको हाथ जोड़े और एक 10-15 मिनट थोड़ा पूजा वूजा करके आगे निकले. मैंने कहा ये क्या किया? तो बोले इस पहाड़ देवता की मैंने परमिशन ली है, मैं आप पर पैर रख रहा हूँ, मैं मेरी आजीविका के लिए शिकार करने जा रहा हूँ या कुछ सामान कलेक्ट करूँगा, उसकी अनुमति हमको दे. अब ये कितनी ऊंची फिलॉसफी है कि हम केवल बोलते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, वो आचरण में रख रहा है. उसको ये श्लोक नहीं आता होगा, इदावास्यमिदम सर्वम, उसको नहीं आता होगा, लेकिन उसके आचरण में है. एक उदाहरण मैं हमेशा बताता हूं कि जनजातियों में जो धर्म संस्कृति या स्पिरिचुअल फिलॉसफी है वो कितनी उच्च कोटि की है. हम बोलते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा. आपको आश्चर्य लगेगा जानकर ये, आज भी कुछ लोग बोलते कि ऐसा है क्या. तो ये सहज भाव से, मैंने भी ऐसा ही पूछा. यहाँ जनजातियों में या कहीं भी भारत में जनजातियों में भगवान की जब प्रार्थना करते हैं या भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान से कुछ अपने लिए नहीं मांगते हैं. ये आपको आश्चर्य लगेगा. कहीं भी आप जाइए और किसी भी जनजाति को पूछिए पूजा करते समय कि आपने भगवान से क्या मांगा, बोलता है भगवान से क्या मांगना है, भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं. तो हमको आश्चर्य लगता है प्लेन्स के लोगों को, बाहर के लोगों को, अरे भगवान से कुछ नहीं मांगते तो पूजा किस लिए है. तो वो बोलता है पूजा तो भगवान के लिए है, भगवान की आराधना है, भगवान का मैं वर्णन कर रहा हूँ कि तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, जो एट्रीब्यूशन हम देते हैं वो सारा.
तो मांगा क्या? तो बोले मांगा कुछ नहीं, उनके कंसेप्ट में नहीं है मांगना। ये हमको लगता है कि भगवान से थोड़ा एक पाव पेढ़ा चढ़ा दिया तो मुझे पास कर दो, 200 रुपये की हमने रिसीप्ट काटी कहीं तो हमको नौकरी लग जाए, मेरा बिजनेस सफल हो जाए। तो ये बहुत ही छोटी बात हम मांगते रहते हैं, जबकि जनजातियों की परंपरा में आप डॉक्टर अतुल जी हैं यहाँ, इनको पूछ सकते हैं कि जनजाति मांगता क्या है भगवान से। वो बोलते हैं मांगते तो कुछ नहीं है, कभी नहीं मांगते। मतलब ये बहुत ही कितनी उच्च इसको विचारधारा हम कह सकते हैं, ये नहीं है कहीं भी। और दूसरा हम बोलते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना और वसुधैव कुटुंबकम। अब इसका उदाहरण यहाँ कैसे है जनजाति धर्म संस्कृति में? यहाँ मैंने एक डांग का उदाहरण दिया था पिछली बार। डांग में अपने एक जो ये है वो डांग में गए थे सर्वे करने के लिए कॉलेज स्टूडेंट्स। तो उन्होंने एक जनजाति महिला को घर में गए डांग के एरिया में, उनको पूछा कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं। तो मेंबर्स है तो इसने कहा कि हमारे घर में 23 मेंबर है। तो ये लड़का सर्वे करने वाला है, 2-3 लड़के थे, इन्होंने देखा कि घर में तो 5-6 लोग दिख रहे हैं, आप बोल रहे 23 है। तो बोलते हाँ 23 है। बोले कैसे गिनाइए? तो ये हम 6 लोग हैं घर में, ये पति है, मेरे बच्चे वगैरह, ये मेरी 2 मुर्गियां हैं, ये 3 बकरियां हैं, ये 6 पेड़ है। वो सहज भाव से बता रही थी, मतलब ऐसा वो कोई ड्रामाटाइज करके ऐसा नहीं है कि इसने पूछा तो मैं इंप्रेशन करने के लिए कुछ जवाब दूं, ऐसा नहीं था। इंप्रेस करने के लिए कुछ नहीं था वो। तो उसने पूछा ये परिवार है? बोले हाँ। आपने मेंबर पूछे तो मैंने बताया, आप पूछते कि मनुष्य कितने तो मैं बताती 6 है, लेकिन आपने परिवार पूछा ना। तो वसुधैव कुटुंबकम बोलते हमें आचरण यहाँ है। तो ये जो मैंने कहा कि जीवन दर्शन या जीवन मूल्य कितने उच्च है, इसके ये उदाहरण है। इसलिए ये संस्कृति कितने भी चैलेंजेस होने के बाद आज भी जिंदा है। हाँ, भले ही उसकी पूजा पद्धति आज बदल गई है, जोर जबरदस्ती कहिए, एल्यूरमेंट्स से कहिए, कोई चर्च में जाने लग गया या कोई मुस्लिम बन गए, अलग बात है। ये है, ये खतरा तो है, क्योंकि ये बाकी विचारधारा है जो इसको सहन नहीं कर सकती है। कल जो बात आई थी टॉलरेंस की, तो टॉलरेंस तो बहुत छोटी चीज़ है, हमारे यहाँ रेस्पेक्ट है सबके बारे में। तो इनको हमको समझना पड़ेगा। अब ये कहाँ से बदलना या कहाँ से खतरा शुरू हुआ, तो मोटा मोटी हम समझ सकते कि जैसा बताया कि नॉर्थ ईस्ट में तो कभी मुगल आक्रमण तो बहुत बार किया उन्होंने, लेकिन जीत नहीं पाए नॉर्थ ईस्ट को। नॉर्थ ईस्ट के वॉरियर्स ऐसे थे। लेकिन जब चर्च आया यहाँ ब्रिटिश सत्ता के साथ, तो रॉबर्ट रीड नाम के एक गवर्नर थे आसाम के। उस गवर्नर ने एक योजना बनाई, वो डॉक्यूमेंट है रिटन। उस स्कीम का नाम था, उस प्लान का नाम था न्यू इंग्लैंड कॉलोनी और क्राउन कॉलोनी प्लान। ये क्राउन कॉलोनी प्लान क्या था? तो उन्होंने कहा कि देखिए, रॉबर्ट रीड ने लिखा ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भारत को आपको यदि अपने कब्जे में रखना है तो यहाँ इतनी डाइवर्स कल्चर है और इतनी डीप रूटेड सारे बातें हैं, परंपराएं, कि इसको उखाड़ फेंकना मुश्किल है और ऐसे देश पर राज्य करना भी मुश्किल है। आपको यदि इसको कब्जे में लेना ही है तो आपको कहीं ना कहीं सबको एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो एक जैसा बनाना मतलब क्या? तो एक कल्चर के बनाओ सबको। तो उनको लगा कल्चर के बनाओ इसका मतलब इनकी पूजा पद्धति या भगवान बदलने से ये सब हो जाएगा। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक 10,000 मिशनरी भेज के सारे कल्चर को एक इस बैनर के अंडर लाना और सबको एक जैसा बनाना, तो हमारा राज करना आसान हो जाएगा। ये प्लान था वो, और उसके अनुसार काम भी हुआ। और हम सब जानते हैं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में फिर एक चर्च के मिशन ने, या जो भी अब्राहमिक रिलीजन्स हम कहेंगे, उन्होंने एक प्लान जो चला है उसके अंतर्गत एक पहले जनजातियों के फेथ को, कल्चर को, हिस्ट्री को उन्होंने एक थ्रेट दिखाया कि आपका है क्या? आपका कोई धर्म ग्रंथ नहीं, आपका कोई भगवान साकार रूप में नहीं, आपकी कोई एक निश्चित पूजा पद्धति नहीं, आपका कोई मंदिर नहीं, प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं कि जहाँ एकत्रित आकर आप पूजा करते हैं। त्रिपुरा में है, लेकिन बाकी स्टेट्स में ये बहुत ना के बराबर है, निराकार की पूजा रहती थी। तो इन्होंने कहा आपका तो कुछ नहीं है, तो आपकी आइडेंटिटी क्या है? तो भोले भाले लोग थे, हाँ हमारा तो कुछ नहीं है, लिखा हुआ कुछ नहीं है, तो हमारा कुछ भी नहीं है। जैसा मैंने कहा पहले कि जैसे वो आए नहीं तो कुछ भी नहीं था,
वो जब बोलेंगे कि हाँ मैंने आपको डिस्कवर किया है, मैंने आपके बारे में लिखा है, तो हम एग्जिस्टेंस में आते हैं। ऐसा धारणा थी, आज भी है। तो फिर चर्च ने कहा कि ठीक है, हम आपको आइडेंटिटी देते हैं, एक आसान भगवान देते हैं कि बस हर रविवार आइए, थोड़ा प्रे करिए और आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो सैल्वेशन विद इन आवर्स ओनली, ये जो है ये सबसे बड़ा चैलेंज केवल नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। कि उनका कहना है हमारा एक भगवान, एक धर्म ग्रंथ, एक पूजा पद्धति, एक प्रेषित, इनको आप मानेंगे तो आपको जीने का अधिकार या सैल्वेशन का कोई रास्ता मिल सकता है, इसके अलावा नहीं। बाकी जो है वो सब शैतान है, वो सब बारबेरिक है, वो सब एक जिसको पिछड़ा हुआ बोलते हैं वो है, वो अमानवीय है। हम केवल सुसंस्कृत है और उस नाम पर फिर धीरे 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 एल्यूरमेंट से कहिए, फोर्सफुली कहिए, ये सारे जो एंशंट ट्रेडिशंस कल्चर थे इस पर इन्वेजन शुरू हुआ और स्थिति यहाँ तक आई कि अब हमको ये एक जैसा हमारा धर्म हो गया तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हुई। हमको लगता है कि अंडरग्राउंड मूवमेंट्स अलग और ये आक्रमण अलग, धार्मिक, ऐसा नहीं है। बिरसा मुंडा जो फ्रीडम फाइटर थे, जिनके नाम से आज 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस भारत सरकार ने डिक्लेयर किया है, वो बिरसा मुंडा स्कूल में पढ़ते थे तो उनको क्रिश्चियन बनना पड़ा, उनका नाम क्रिश्चियन लगाना पड़ा। जब स्कूल से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि ये पास्टर जो है स्कूल का, ये फादर जो है, ये हमारे भगवान को गाली देते हैं, तो मैं स्कूल में नहीं रहूँगा। वो बाहर आए। फिर बड़े जैसे हुए तो उन्हें एक आंदोलन चलाया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कि हम लगान नहीं देंगे, हमारे पर क्यों ज़ोर ज़बरदस्ती है, हम गुलामी सहन नहीं करेंगे। और एक 40,000 लोगों को एकत्रित करके लड़े वो। तो वो बोलते थे साहब साहब एक टोपी। इसका मतलब क्या है? तो बोलते थे ये जो ब्रिटिश ऑफिसर है इसकी टोपी और ये जो चर्च का पास्टर है इसकी टोपी, ये एक है। मतलब आप समझिए कितने पहले संकट को जनजाति व्यक्ति ने पहचाना था। साहब साहब एक टोपी का मतलब ये दोनों एक है और ये दोनों हमको मिटाने के लिए आए हैं। और ऐसा ही नॉर्थ ईस्ट में हुआ, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट आई कि नागा फॉर क्राइस्ट, मिज़ो नेशन, कार्बी नेशन, बोडो नेशन, ये जो नेशन की कंसेप्ट है कि हम कम्युनिटी नहीं है, वी आर द नेशन, हम इस राष्ट्र के नहीं है, इस सनातन संस्कृति के नहीं है, हम सेपरेट है। ये धीरे 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 जहर भरता गया और ये एक बड़ा थ्रेट, एक बड़ा चैलेंज इन धर्म संस्कृति के सामने आया कि अब अपना तो सब भूल रहे हैं हम। जो एससी जमीर थे नागालैंड के, चीफ मिनिस्टर भी रहे, बाद में गवर्नर भी रहे, उन्होंने भी कहा कि हम तो भूल गए सारा। पहले लगता था कि ये सारा बहुत अच्छा है, लेकिन अब तो सारा हमारा वॉश आउट हो गया, अब हम क्या करें? तो इस पर फिर लोगों ने कहा कि नहीं, इस पर भी उपाय हो सकता है। और जैसा मैंने कहा कि चैलेंजेस है तो उसको सोल्यूशन भी है। तो 1899 में सेंग खासी मतलब खासी जयंतिया में एक मूवमेंट शुरू हुई इंडिजिनस फेथ ऑर्गेनाइजेशन की। उसके पहले जमातिया हौदा का हमने सुना है कि 450 साल पहले जमातिया हौदा शुरू हुआ है। उसके बाद हर एक स्टेट में अपने अपने परंपरा को, धर्म को, संस्कृति को बचाए रखने के लिए मूवमेंट शुरू हुई। मिजोरम में रानी रोपिलियानी का नाम तो हमने सुना है कि 100 साल पहले उन्होंने अपने धर्म, संस्कृति, अपने देश को, अपनी ज़मीन को प्रोटेक्ट किया। उनको अंग्रेज़ों ने कहा कि हमसे डील कर लो, आपका ही राज रहेगा, आपके पति तो मारे गए लड़ाई में, आपके बेटे भी मारे गए, अब आप बच्ची है, आप हमसे एक एग्रीमेंट कर लीजिए कि राज गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रहेगा, राज आप रानी रहेगी। तो उन्होंने कहा ये धरती मेरी माँ है, माँ का सौदा नहीं करूँगी। अब उनको किसने सिखाया था? वो हाइपो जादोनांग मणिपुर के एक छोटी पहाड़ी में कम्बिरान नाम के एक छोटे गांव में रहते थे। केवल 25 साल का जीवन वो वहाँ रहते थे। उन्होंने कभी गांधी जी को देखा नहीं, लेकिन वहाँ वो बोलते थे आइपो गांधी जिंदाबाद, अपाओ गांधी जिंदाबाद, मतलब बाबा गांधी जिंदाबाद। उन्होंने गांधी जी को देखा नहीं। वहाँ उधर राघोजी भांगरे जो महाराष्ट्र में फ्रीडम फाइटर हुए, वहाँ रामजी गोंड हुए। तो रामजी गोंड नाना फडणवीस को मिलते थे, वो कब मिलते थे पता नहीं, तात्या टोपे या तंट्या भील को मिलते थे पता नहीं। तो जनजाति और गैर जनजाति, इनका जो एकात्मता थी, ये प्रयासों से नहीं थी, ये नेचुरली थी। और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में भी फ्रीडम फाइट ये चली और अपने धर्म संस्कृति को बचाने का अभियान भी चला। तो जैसे मैंने मिज़ोरम कहा, तो मिज़ोरम में अभी एक 40 साल पहले, हमको लगता है मिज़ोरम हाथ से गया,
लेकिन मिजोरम में उन्होंने एक लिस्ट बनाई तो 33 विलेजेस मिले कि जहाँ अपनी धर्म संस्कृति का पालन मिजो लोग करते हैं। उन्होंने अपना संगठन शुरू किया, नुन्ना लालनम, मिजो साखुआ बोलते हैं, मिजो स्वधर्म। नागालैंड में रानीमा गाइदिन्ल्यू हाइपो जादोनांग, उन्होंने एक संगठन शुरू किया, जेलियांगरोंग हराक्का एसोसिएशन, जो अपने मूल संस्कृति को बचाने का कार्य कर रहा है। उनके आज 36 प्रेयर हॉल बन गए हैं नागालैंड और असम में मिलाकर। फिर इधर अरुणाचल में एक ऑफिसर थे, आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर तालोम रुकबो, उन्होंने अपनी नौकरी छेड़ी। उन्होंने कहा नहीं, मेरा देश, मेरी आइडेंटिटी, मेरे संस्कृति को बचाना है, मैं नौकरी नहीं करूंगा। उन्होंने दोनी पोलो एलम के बांग 1986 में शुरू किया ये नाम का संगठन। आज वह उन्होंने कहा कि हमारी कोई साकार पूजा पद्धति देनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सामान्य व्यक्ति को एकत्रित आने का कोई जगह नहीं है, केवल एक बार साल में पूजा करने से नहीं होगा। तो साप्ताहिक प्रार्थना गृह उन्होंने शुरू किए, उसको उन्होंने नाम दिया गांगिन, दोनी पोलो गांगिन। दोनी मतलब सूर्य, पोलो मतलब चंद्र, तो उसकी उपासना वो करते हैं दोनी पोलो की। तो उसके प्रेयर हॉल शुरू है। आज 550 प्रेयर हॉल अरुणाचल में बन गए हैं। मेघालय में सेंखासी सेंगराज है, सेंग खिलांग है। इधर असम में लक्ष्मण संघ है, बोडो में बाथो धर्म है, फिर ब्रह्म समाज है। इधर मणिपुर में तिंका और अंगवांग चापरियाक नाम का संगठन है कि जो अपने इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए कार्य कर रहा है। उनके भी लगभग एक 27-28 प्रेयर हॉल अब बन गए हैं। तो हर स्टेट में, जैसे नागालैंड का उदाहरण दिया, हर स्टेट में, सिक्किम में भी, वहाँ हर एक जनजाति का अपना अपना धर्म संस्कृति का संगठन है। ऐसे सभी जगह, अंगामी में है, इधर चाकेसांग में है नागालैंड में। अपने को नागालैंड भी लगता है कि चला गया, ऐसा नहीं है। दिमासा में है, बोडो में है, शिवराय बिस्मय बसुंग का दिमासा में संगठन है। ऐसे ही उधर हर जनजाति में, मणिपुर में शुरू हो रहा है, जेलियांगरोंग में जैसे मैंने बताया, वैसा ही चिरू में अब शुरू हो रहा है। तो हर जनजाति में अपने रूट्स को पकड़ कर रखना और उसको आगे बढ़ाने की मन में जो प्रबल इच्छा शक्ति जो है वो बढ़ रही है जगह जगह। इसलिए चैलेंजेस है तो उसके सॉल्यूशंस भी सामने आ रहे हैं। इन सॉल्यूशंस को हमने समझना पड़ेगा और इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। अब ये सनातन या नॉर्थ ईस्ट की धर्म संस्कृति परंपरा जिंदा क्यों रहे, ये केवल 1 मिनट में मैं रखूंगा, फिर मेरा समय समाप्त हो रहा है। तो हम सब जानते हैं कि जैसा मैंने पहले कहा कि ये झगड़ा है ओनली और अल्सो का। पूरे विश्व में जो आज अनरेस्ट है या क्राइसिस है, या जिसको हम क्लैशेस हो रहे हैं, द क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन, ऐसी जो हंटिंगटन ने किताब लिखी है, उसमें उसने भी कहा ये झगड़ा है ओनली और अल्सो का। तो अब्राहमिक रिलीजन्स बोलते हैं सैल्वेशन विद इन अवर्स ओनली, थ्रू अवर्स ओनली। तो ये हमारा ही सच, बाकी सब झूठ। लेकिन भारतीय सनातन संस्कृति या परंपरा के जो भी जितने भी पंथ हैं जो भारत की धरती से निकले हैं, वो कहते हैं सैल्वेशन विद इन अवर्स अल्सो। आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, सबको मिलकर। तो यदि विश्व को जीवित रहना है, विश्व में शांति रहनी है, हार्मनी रहनी है, प्रॉस्पेरिटी लानी है, तो ओनली से नहीं होने वाला है, अल्सो से ही होगा। तो अल्सो को यदि जिंदा, मतलब अल्सो को यदि हम रखते हैं, तब ये विश्व आगे बढ़ेगा। अन्यथा सारे एक, जिसको हम कह सकते हैं, एक विनाश होने की संभावना है। तो अल्सो के पक्ष में खड़े रहने वाली ये परंपराएं हैं। कभी यहाँ ऐसे नहीं हुआ कि देव वर्मा ने कहा कि हमारा बाबा गढ़िया ही सच है, बाकी वो दोनी पोलो वगैरह झूठ है नॉर्थ ईस्ट का। कभी दोनी पोलो वालों ने क्या नहीं कहा कि वहाँ सेंग खासी का जो भगवान है वो झूठ है, हमारा ही सच है, कभी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो नेचर में नहीं है, वो सोच में नहीं है, वो अपनी थॉट प्रोसेस ही नहीं है। इसलिए इस परंपरा को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना ये विश्व कल्याण के लिए आवश्यक है, केवल आइडेंटिटी के लिए नहीं। केवल कपड़ा कैसा, खाना कैसा, पहनना कैसा, घर कैसा, फेस्टिवल कौन से, इस पर रिसर्च नहीं होता है, इस पर डॉक्यूमेंट, ये तो कोई भी कर लेगा। ये रिसर्च नहीं है। रिसर्च है जो मैंने कहा उनका जीवन दर्शन, प्रकृति के प्रति क्या है, दूसरों के प्रति क्या है, भगवान के प्रति क्या है। तो तीनों उदाहरण मैंने दिए आपको। प्रकृति के प्रति कैसे उदाहरण है, भगवान के प्रति उनकी सोच क्या है, और दूसरों के प्रति क्या सोच है। तो ये सोच जिंदा रहना विश्व कल्याण के लिए आवश्यक है। इसीलिए ये सारे जो आज नॉर्थ ईस्ट में लगभग
110 स्वधर्म संगठन चल रहे हैं, उनको कोऑर्डिनेट करने का प्रयास भी चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में एक जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच है कुछ जो इन सबको कोऑर्डिनेट करता है। पिछले ही साल वॉइस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इस नाम से 3 दिन का वर्कशॉप गुवाहाटी में हुआ, जिसमें 89 ट्राइबल कम्युनिटीज़ के फेथ एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस आए थे और उन सब ने मिलकर ये रिजॉल्व किया वहाँ कि हाँ, हम अपनी इस परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए कुछ मॉडर्न उसमें एक बदलाव कर सकते हैं बाहरी, लेकिन उसका जो कोर है वो सेम रहेगा। तो मैं आप सबको आह्वान करता हूँ कि एक अच्छी मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट में चल रही है, ऐसे कार्यक्रम बार बार नॉर्थ ईस्ट में हर स्टेट में हो तो इन मूवमेंट्स को एक बल प्रदान होगा और इन मूवमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे तो विश्व कल्याण होगा। यह अपेक्षा व्यक्त करते हुए आप सबको एक बार धन्यवाद देते हुए मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। Thank you very much, sir. It was a wonderful speech. Now I would like to request Sukadev Sharma Hanjamam to deliver his valuable speech. I'll be speaking today on Vaishnavism, Manipur Vaishnavism in Manipur, but I will not go into the theoretical aspects because yesterday one of the speakers, Sri Kakching Davam Rajamani Sharma, he must have covered up most of the theoretical aspects. Today I just want to highlight, since the session is on challenges before faith and tradition in Northeast Bharat, I just want to highlight what is the situation of Manipur Vaishnavism. Before that, I'll just go through how Vaishnavism came to Manipur and how it has rooted in Manipur and its diasporic population in Myanmar, Bangladesh, and Indian state of Assam and Tripura. Tripura also, we have very good diaspora here, since maximum of a matrimonial relation of royal are from Manipur. So we have a very good population here, and also in Assam, particularly in Barak Valley. So let me begin by saying that many people believe that the Indic tradition of Manipur came from West, particularly from Bengal. People thought the idea spread from Bengal to northeastern and it goes like that. But in Manipur context, let me share you that it was as early as 1470, the idol of Bhagwan Vishnu was gifted from Myanmar, particularly Kingdom of Pong. It was in Upper Myanmar site. So as part of the celebration of winning the battle against different small principalities in Myanmar, they have exchanged ideas and they have sit together, and King of Pong, what you call as San, particularly locally it is called Pong, but it is called as San. San Kingdom, it is in the northern side of Burma, particularly on border of China, Yunnan and all that side. So that time it was quite powerful, so they have a relation with that, and they have divided over the territory where they win. And part of the celebration, they have shared different items. King of Manipur give different items to the King of Pong, and King of Pong give different items to the King of Manipur. And in that, the idol of Bhagwan Vishnu was there. But that time, Manipur did not started much of the Indic religion practice. So, but the population of Sanatan Dharma was there. So king invited one of the Brahmin family and they started the practice. And now the place where it is worshipped is called as Bishnupur. It is called Bishnupur district. And we still have the temple, the first built temple of Vishnu. Now it comes under Archaeological Survey of India as a central list. So from that onwards, the family was given name as Furai Latman. Furai means building. So those who worship God in that building, they were given a name and they were assigned to worship this God, God Vishnu. Now the God is with the Maharaja of Manipur in his palace. And the temple is now with the Archaeological Survey of India, and we're trying to revive it as a living temple so that we can practice
the Vishnu worship, and also we can remain the temple as it is. So last year we tried to have a puja kind of thing. Since it is under archaeological survey of India, we did as a cleaning activity and we did a small exercise. So after that, many tradition of Manipur came. Many tradition of Indic religion came to Manipur. The Vishnu worship did not continue for long, or it did not reach the local population because the relation between the king of Manipur and the king of Pong, king of San, was mostly on political terms. So religious-wise, the emphasis was less. But later on, different faith have come from the western side as Bengal side. Now, at that point of time, it is not West Bengal or East Bengal, it was the Bengal. A different tradition of came, and the first king who adopted Hinduism is King Charai Rongba at the end of 16th to 17th century. But he did not emphasize much on the population. So he adopted it, the palace adopted it, the nobles adopted it, but he did not force it on to the people. He did not say you have to do it. You have to learn it, and the next king, what you call as king, in local term we call as King Pamhaiva, he was one who made it as a state religion. Then everyone adopted it. But when the next king came, Rajasri Bhaigachandra, what we call as Rajasri Bhaigachandra, Raja Rishi, he was a king, but at the end of his kingship, he gave up this idea of king and he wished to go to Radhakunda, but he died at Navadip. And there he got the name as Rishi. He was a king, so we call now as Raja Rishi. He was a king, but he was a Rishi. So popularly now people call as Rajasri Bhaigachandra. He is the one who conceptualized all this idea about Natta Sankirtana. He was the one who popularized this idea of Ras Leela. People thought Ras Leela is a dance. Yesterday, I think our speaker also must have emphasized Ras Leela is not a dance, it's a devotion. When you see anything about Ras Leela, at the end you will see all pujas will be going on. It is not that people just finish the dance. At the end, Arati will be there, everything will be there, then the dance conclude. Now, earlier it has to be done only at the mandap. Now, commercially, a lot of things has done, a lot of things has changed. Institutions are coming up to train all this, but beginning-wise, it has to be done only with the mandap, and it is not for entertainment purpose. It is to serve the god. The different forms are there, but still some forms are preserved only for God, so only for specific days and only for God. And it has to be done at the mandap only. So when King Bhaigachandra came to power, the first thing he did is he tried to establish different institutions for Indic religion, Sanatan Dharma, and also he tried to spread out to different areas. And from that onwards, Navadip was a famous place, Puri was a famous place. And later on, he went up to Radhakunda, Vrindavan and Radhakunda. Radhakunda, there are a lot of akharas from Manipur still now. And the king developed his own temple so that people go for pilgrimage. And Navadip is quite famous for Manipur because when Rajasri Bhaigachandra was exiled, he came to Assam, what we call as Tekhao. Locally it's called Tekhao. He came to Assam, and from the support of the king, he regained back the kingdom. So as part of all this political strategy, the people who are the king who ruled in Manipur that time, he told the king of Assam that he is not a real king. So if you want to try out whether he's a real king, you should do some exercise. And we have a famous statue in Manipur we call as Rajasri Samu Phaba. Samu Phaba is Rajasri king taming of wild elephant. So the king of Assam tried, if you can tame this wild elephant in Assam, then we will recognize you as a king. So at that time, the idea of Radha Krishna was very popular. So it was said the king offered prayer to the god, and the next day he could tame easily the king. So Assam king recognized him and returned his support so that he can win back. So once he reached
Manipur, he forgot that he need to build temple for Bhagavan Krishna. So there was a lot of stories now in Govindaji temple. We have among the bog we have one dishes of bamboo. Oh no, banana stem. The story came from this idea of Krishna, Bhagavan Krishna, because when Bhagachandra assumed the king after he promised that he will build a temple, once he was busy with administration, he forgot that he has to do something for the god. So he was reminded by a story from the hill areas. One tribal lady, he reminded that this is something he has to do. So he called the tribal lady, he invited in the palace, then he explained this is the situation. Bhagavan came to Rajashri Bhagachandra, he told that if you want to build my idol, you have to go to a particular place, what we call as Kaina. Kaina is a pilgrimage site in Manipur. You have to go to that particular place. There's a jackfruit tree. From that jackfruit, you have to build. You have to make idols of me, so that you can worship in the palace. So, but according to his dream, he went to that place. He bring the jackfruit trees, and he came to palace. But when he prepared that idol, again it was said that it is not like what I thought. So they prepared 7 idols on that. From the same jackfruit tree, they prepare 7 idols, and 7 idols, the second one remains with the palace, what we call as Sri Sri Govindaji temple now. And the other remaining 6 went to different places. And one came to Kolkata and Navadip, we call as Anu Prabhu temple. So it is now the daughter of Rajashri Bhagachandra used to worship that one, but now it is tradition still continues. And different other religion went to different place. So for today's thing, what I want to emphasize is, when once the Sri Govindaji temple was established in 1776, it moved along with the king. It was a royal temple, but everybody was allowed to worship. And since Manipur is a kingdom in Indo-Burma border side, there are a lot of attack between Burma and Manipur also. Manipur will take over different places of Burma. Burma will take over different places of Manipur. And Manipur, when they occupy Manipur for 7 years, most of the royal palaces, people, king, royal family, they moved to Kachar. So Kachar, we have a very good population. Kachar now is divided into different districts, but still in the Barak Valley, we have a very good population. And Rajashri Bhagachandra emphasized that he is not the king. The king is Sri Sri Govinda. So when we go for war or when we go for anything, we used to chant Sri Govinda na joy ore. Means the chant gives to Sri Sri Govinda. We don't chant Maharaja ki joy. We chant Govinda ki joy. So Rajashri Bhagachandra, he is the first king who said ki I am the servant of the God and God is the king. So whatever we do in the kingdom, we do in the name of Sri Sri Govindaji temple. Govindaji, and we have the temple. And temple, since Sri Sri Govindaji is a king, anything happen, it moves along. Because there is a tradition ki if the enemy takes over Sri Govindaji, then it is like taking over Manipur. So when when Burma invaded Manipur, Govindaji moved from different places. So we move up to Sylhet. Sylhet was part of, now so it's a political connection. Now we have to go to Kolkata and Kolkata to here. But at that point of time, a lot of people moved to Sylhet to study. So Sylhet is very easy access for us. And the easiness of that one, a little emphasis on that. Because Sri Govindaji moved from the temple side to a different location when it comes to war, and when we regain, we move to the temple again. Idea is, it is a king, so if somebody takes over king, then you takes over the kingdom. So if the enemy takes over the king, the Rajashri Bhagachandra also, if he don't take Sri Sri Govindaji, it is not taking over Manipur. So idea was Rajashri, so he at some time, I don't remember exactly the date, we have Ras Abhishek for Rajashri Bhagachandra also on a particular day.
So as part of that, one ideas I want to share is Govindaji was an institution itself. It is not only a temple, because it's researched out to different. In Manipur, we have in different localities all these mandap systems is there. So Govindaji temple is the authority of doing all this in promotion exercise or in inculcating new ideas or whatever practice. If you are in confusion, you go to Govindaji temple. You have the Brahma Sabha. They are the one who deal with all this exercise. And one example I want to give you here is about before that, I just want to say when British came to Manipur after the Anglo-Manipur War, they came along a lot of missionaries. So they started as idea in Imphal Valley. They come up with a school called Patrick Hughes School, but they could not move, except giving education. They could not do what they want. Their interest is missionary exercise. They want to convert people. They want to do all these things and all. But when they come to Imphal Valley, since the institution of Govinda is very strong, and even King himself could not say anything, because even they have political relation with the British, they could not say, you allow all this. So finally, after staying 1 year in Imphal, setting up schools, they could not convert even one. So they went to hill areas so that they could do all this exercise later on. Now we see, as our previous speaker has said, we see a lot of traditions coming back because they know by 100 years they realize that on one side we are changing so many things, but on one side we don't know what even our tradition, our practice also, how we pray, how we do, because at some point of time, in particular tribal areas where insurgency are strong, they give up all this exercise in a very systematic way because they have to follow something, they have to follow some kind of support from places where they don't want the local tradition. Okay, I think Ramiji has done a very good work on that. Maybe she can emphasize on how all this funding agencies come to these different insurgent groups and they have to follow the thing. At some point of time, it was said, you bring out 10,000 pastors from Northeast, we will give you so much funding. I cannot give you a particular reference, but I can explain in detail. And if you go to all these European countries and USA, you will find all pastors are from Northeast India. I was in Florida for my postdoc program. Then whatever the churches around are people from Northeast only, and there was one from Manipur also. So later that time, I realized how they spread their wings in different areas. And one particular example I want to give you about is it's not only tradition, but you have a scientific input in it also. So when Rajashree Bhegachandra gave up his kingship to his son and he wants to go to pilgrimage, he wants to die in Radhakunda. So he came along. I'll just read out the text because it will be more interesting. Because why I want to read out, because it has a very dynamic of water, using waterways. Now Manipur, we cannot use waterways. We are going by road. We are going by flight. But during that time in 1797-98, the king traveled to Radhakunda by waterways. And the waterways, now we can imagine, I think it's all connect from Imphal to Radhakunda by Ganga tributaries. And from Imphal, let me just read out, because people from here also will easily understand the route that I'm going to share it. There was a book called Chingdang Komba Ganga Chatpa. It's a Manipuri text because we have royal king support with the institution, so they bring different scholars to write all these stories. So it is a story about how King Bhegachandra went to Ganga. Okay. So is that from Manipur, there is a Barak River, everybody must have heard of it. From Barak River, from Ningthau Khong used to be a palace. From Ningthau Khong, Laimatak River is there. From Loktak, it connects to Barak River. From Laimatak, then from Laimatak to Barak, you don't have a direct connect. So there is a small river called Irang River. From Irang River, you go to Barak. From Barak, you go down up to Churachandpur side, then goes up to Jiribam, then it goes to Silchar,
And from Silchar, it goes to Sylhet. From Sylhet, it goes to Tripura. Let me just read that. It will be more interesting because it's not my write up, it was from the book that we translated it. Because so, how they use this waterways and what was the method they are using, because now we don't use waterways, but at that point of time, the strategic thing, then how using of boat, using of navigation. We heard a lot of stories about boat making in Manipur, and we have books on how boats are built. But now we don't see all these boats. We don't use water. Still, since Loktak, everybody must have heard about Loktak. Okay, here it is. Let me just read out for you. On 5th February 1798, the king with a large retinue started for pilgrimage to Vrindavan. He was accompanied by his queen, 4 sons, 3 daughters, and large number of nobles and attendees. His porter numbering 300 and pilgrims about 400. He took arms and ammunition and royal insignia with him. In his absence, Yuvraj Levana Chandra carried out the administration. Passing through Kanchipur, Kanchipur is all palace, and Ningthau Kong. He reached Laimatak. Laimatak is a river, and crossing it reached Irang River. That's another river we have. Then the Bank of Barak follows the course, later reached Kasar. The kingdom of Kasar presented him with a big amount of silver, coin, and cloths. Proceeding by boat on the Barak, the king reached Banga, where the Barak breaks up to 2 streams, the Surma and Kusiara. Proceeding by boat on the Surma, he reached Sylhet, where he had a formal meeting with the British commissioner administrating a large number of districts. Present were exchanged. Jai Singh present with artistic skill, silk goods, horses. The English commissioner presented with a telescope, 2 tents provided this and this, to carry his luggage to Tripura, and 2 army sepoy. While in Sylhet, the king visited Dhaka Dakshin, the ancestral of Chaitanya father, and performed kirtan. Then he reached Agartala and gave his daughter Harisheswari in marriage to Rajdar Manik, the Raja of Tripura. The king proceeded with his retinue in a fleet of 67 boats. Now we don't see all these boats, and they call as the king boat. They call as Ningthawi Khongnet. This is a big boat, they said, but now we don't see any of this. 60 out of 15 were contributed from Raja of Tripura. The pilgrimage proceeded Meghna and Padma. He then presented British Indian coin to Raja of Tripura. Now the king sent back his boat, contributed Raja of Tripura, and proceeded by land with his party till he reached an old channel of Ganga. From there he went to Radhakunda, but he could not reach Radhakunda. He died after proceeding all channel in the fleet of 52 boats. For one day, the king sent all his boat to Navadip with some of his men, and he and party reached Krishnanagar by land. He died here, but his son continued the route and he performed his puja in Radhakunda. From then onwards, we started going to Radhakunda from 1798 to till now. So here I want to emphasize is how scientific intervention were used in different pilgrimage routes. Now we just say, okay, we'll go by flight, we'll go by boat, we'll go by road, but now waterway, importance of inland waterways. When it goes to Burma for war or for anything, the same, we have 2 routes. One is a land route that connects. It is called one of the oldest trade route in this part of the region. And most of our Indic tradition also, part of Indic tradition moves to Southeast Asia through Manipur. People have come by boat from South India, Visakhapatnam, Chennai, and all these places from Kolkata. But by land route, it goes to Manipur. So Manipur has that advantage of seeing all this kind of people who move from east to west. And at that point of time, moving is not just about crossing that way. They stay over a certain period of time in different places. In Manipur, since it is a kingdom, whoever comes, they stay over a certain period of time. So all this gunpowder making and all, Manipur have learned from different traders, particularly from East Asia. So at the end, what I want to emphasize is
all these activities are mostly done with Sri Sri Govindaji Temple as a center. Sri Sri Govindaji Temple is a source for all these ideas. He is the one who emphasized that we need to do all this. He is the one who negotiated with all people who are beyond border also. Since Manipur had war with Burma, there are a lot of diaspora in Burma. After the 19 to 26 war, a lot of people have moved to Burma also. And luckily, in Burma, Manipur have contributed quite a big contribution in the culture of Burma. The achik, which is called the royal cloths in Burma, it's weaved by Manipuri diaspora only. They are the one who are given this assignment. Only Manipuri diaspora can weave these achik clothes. And it's a royal cloth. And now commercially it is available, but at that point of time, only royal people will use this cloth. And the Kleblery force, the force of Burmese army were taken only from Manipuri diaspora. So there are a lot of connection in Manipur later on. So the Govindaji temple is the one who tried to link all this diaspora also, not only within Manipur, but outside Manipur also. So in 1933, king of Manipur, Maharaja of Manipur, he came up with this idea of linking all these diasporas. And we have meeting, went up to Mandle to have that meeting, what we call as Nikhil Hindu Manipuri Mahasabha. He went to Tripura, he went to, program was started in Imphal, then to Burma, then to Silchar, and different locations. But now, what I want to emphasize is now the Govindaji temple is not that strong as it was. Now, temple has been taken over by the state administration. From 1972, when Manipur became a state, that thing, they come up with the act, Sri Sri Govindaji Temple Act, and it has been taken over by the state administration. So once it has been taken over by the state administration, then it is more of bureaucratizing all this process, because we have to follow different procedures. Government comes up with different members, DC, district commissioners are part of the member, these are part of the member, these are part of the member, then you cut down on different issues. Okay, so the challenges, yesterday I listened to one of the speakers, they said the challenges is not about other people are getting stronger. The issue is within us is how to make us stronger. If you are strong enough, then I think others cannot do anything on us. So the first thing is we need to give some importance on Govindaji's temple, and if the debate now we have is we need to free these ideas from the state administration. Once we free this idea from state administration, I think we can do whatever we used to do earlier. Thank you, everyone. Now, as we have Shri Nathji Maharaj among us, and he has to leave, so I would like to request him to share his thoughts among us. Sada Siva Samarambham Goraksha Madhyamam Asmadacharya Paryantam Bande Guru Paramparam Goraksha Balam Guru Sishya Palam Sesai Malam Sashikanda Bhalam Kalasya Kalam Jita Janmajalam Bande Jatalam Jagadabjanalam Bande Jatalam Jagadabjanalam. उपस्थित सज्जन वृंद, मैं ओडिशा से आया हूँ। मैं नाथ संप्रदाय को बिलोंग करता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी महाराज मेरे गुरु भाई हैं। उड़ीसा में भी गोरखनाथ मंदिर है। नाथ संप्रदाय एक प्राचीन संप्रदाय है। गुरु नानक, तुलसीदास, कबीर, चैतन्य महाप्रभु, इससे पहले नाथ संप्रदाय था। नाथ संप्रदाय प्राचीन संप्रदाय है और नाथ संप्रदाय समग्र भारतवर्ष में तथा बहिर्भारत में विस्तार लाभ किया था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब स्थान में, देश में नाथ संप्रदाय प्रभाव था, अभी भी प्रभाव है। प्राचीन काल में अनेक राजा महाराजाओं ने नाथ संप्रदाय में दीक्षित थे। पहले नेपाल,
नेपाल के प्राक्तन महाराजा पृथ्वीनारायण शाह महायोगी गोरखनाथ जी के शिष्य थे। इसका प्रमाण बहुत है, मेरे पास एक ही प्रमाण है। नेपाल का जो करेंसी नोट है, नोट में गोरखनाथ जी का नाम है। ये करेंसी नोट है नेपाल का, मुद्रा भी है, मुद्रा में ये नोट में गोरखनाथ जी का नाम है। यहाँ अभी चलता है, नेपाल में गणतंत्र प्रतिष्ठा हो गया, फिर भी ये करेंसी नोट चलता है गोरखनाथ जी का नाम में। तो नेपाल के ये बहुत बड़ा इतिहास है, बोलने से बहुत टाइम लगेगा, संक्षिप्त में बता देता हूँ। नेपाल में नाथ संप्रदाय का काफ़ी प्रभाव है। नेपाल में मच्छेंद्रनाथ का रथ यात्रा होती है। नेपाल में नेपाली लोगों को गुरखा कहा जाता है क्योंकि वो गोरखनाथ जी के शिष्य हैं। नेपाल के बाद भर्तृहरि मध्य प्रदेश के महाराजा भर्तृहरि थे, उज्जैन के महाराजा भर्तृहरि गोरखनाथ जी के शिष्य थे। चित्तौड़गढ़ उत्तर प्रदेश राजस्थान चित्तौड़गढ़ के बापा रावल प्राक्तन महाराजा गोरखनाथ जी के शिष्य थे। इसका इतिहास है, बोलने से टाइम लगेगा। तो उड़ीसा के महाराजा, बंगाल के महाराजा, विभिन्न यहाँ बंगाल के जो गोपीचांद था, गोपीचांद उनका राजधानी अभी बांग्लादेश में है, कुमिल्ला में। तो गोपीचांद मैनावती गोपीचंद की माँ थी। ये सब नाथ संप्रदाय में दीक्षित थे। बहुत राजा महाराजा नाथ संप्रदाय के दीक्षित थे और नाथ संप्रदाय का प्रचार और प्रसार किए थे। नाथ संप्रदाय का काफ़ी प्रभाव है महाराष्ट्र में। गोरखनाथ जी के शिष्य गहिनीनाथ जी के शिष्य निवृत्तनाथ जी के शिष्य ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर। ये महाराष्ट्रीय परंपरा है। इसी तरह हर स्टेट में परंपरा है नाथ संप्रदाय का। अभी बोलने से बहुत टाइम लगेगा, इतिहास बहुत है, लंबा इतिहास है। वहाँ हिमाचल प्रदेश में चंबा का इतिहास, चंबा के जो महाराज थे वो भी नाथ संप्रदाय के दीक्षित थे। इस तरह राजा महाराजाओं ने इस संप्रदाय में दीक्षित थे और इसका विस्तार समग्र भारतवर्ष में ऐसे कोई प्रांत नहीं है जहाँ नाथ संप्रदाय का प्रभाव नहीं है। ये त्रिपुरा एक छोटा सा राज्य है, 40 लाख जनसंख्या है, पॉपुलेशन 40 लाख से है। एंड आउट ऑफ 40 लाख यहाँ 13 लाख नाथ है, गृहस्थ नाथ। कोई साधु संत नहीं, मैं तो अकेला साधु हूँ। यहाँ कोई नाथ संप्रदाय के साधु नहीं आया था। 40 साल पहले मैं आया, यहाँ थोड़ा बहुत प्रचार किया। यहाँ गोरखनाथ मंदिर बन गया, यहाँ धलेश्वर में, अगरतला धलेश्वर में 12 नंबर रोड में गोरखनाथ मंदिर है, हम लोगों ने बनाया, पहले नहीं था। तो यहाँ भी गृहस्थ नाथ बहुत है, 13 लाख नाथ है। बांग्लादेश में भी है, बांग्लादेश में 3-4 बार गया हूँ। बांग्लादेश में चट्टग्राम में आदिनाथ मंदिर है, वहाँ आदिनाथ मंदिर गोरखनाथ संप्रदाय का है। गोरखनाथ मंदिर, जालंधरनाथ मंदिर, कानिपानाथ मंदिर वहाँ है चट्टग्राम कक्ष बाजार में। इसी तरह नाथ संप्रदाय का काफ़ी विस्तार समग्र भारतवर्ष में है। नाथ संप्रदाय के कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ नाथ संप्रदाय? नाथ संप्रदाय कंट्रीब्यूशन योग, तंत्र, आयुर्वेद और साहित्य, ये 4 क्षेत्र में अवदान है। योग, तंत्र, आयुर्वेद और साहित्य। योग ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, संक्षिप्त में बताता हूँ। योग नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। योग के बारे में बहुत लोग जानते हैं, बोलते हैं जो पतंजलि ही सबका सृष्टा है। ये ऐसे नहीं है। मैं थोड़ा ये कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। पतंजलि कभी नहीं कहा योग द्वारा रोग दूर होता है, रोग बीमार दूर होता है, पतंजलि योग सूत्र में ये नहीं है। गोरखनाथ जी ने कहा आसनेन रुजुहन्ति, आसन से रोग बीमार दूर होता है। डिटेल इसका है, इसका अभी बोलने का टाइम नहीं है। गोरखनाथ जी ने कहा आसन द्वारा रोग बीमार दूर होता है, वो पतंजलि नहीं कहा। 84 आसन जो है इसका आविष्कार का गोरखनाथ जी हैं, पतंजलि नहीं है। पतंजलि योग में भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मयूरासन इत्यादि आसन नहीं है। पतंजलि से शुद्ध सूत्र रचना किया है। पतंजलि ने कहा स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुखपूर्वक बैठने से आसन होता है, लेकिन आसन कैसे करना है, इसका टेक्निक क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, पतंजलि कुछ नहीं कहा। गोरखनाथ जी इसका विस्तार रूप से वर्णना किया है। इसलिए गोरखनाथ जी का नाम में गोरक्षासन है, मच्छेंद्रनाथ जी का नाम में मच्छेंद्रासन है। पतंजलि के नाम में कोई आसन नहीं है। ये आसन हो गया। प्राणायाम, प्राणायाम में पतंजलि ने कहा 4 प्रकार के प्राणायाम हैं। पूरक प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम, रेचक प्राणायाम, चतुर्थ प्राणायाम, ये 4 प्रकार के प्राणायाम हैं। लेकिन गोरखनाथ जी ने कहा 8 प्रकार के प्राणायाम हैं। सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतली, शीतकारी तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी, तष्ट, कुंभका, सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, यदि ये 8 प्रकार के प्राणायाम, जो प्राणायाम आजकल प्रचार हो रहा है देश विदेश में,
जितने योग गुरु हैं ये 8 प्रकार के प्राणायाम शिक्षा देते हैं। ये गोरखनाथ जी ने कहा ये आसन प्राणायाम करने से क्या होगा ना, प्राणायाम युक्त है ना सर्वरोग क्षय भवित, प्राणायाम से ही सब रोग दूर हो जाता है, गोरखनाथ जी ने कहा। अच्छा, ये प्राणायाम हो गया। इसके बाद षटकर्म होता है धौतिर्वस्ति तथा नेति स्त्राटकम नौलिकम तथा कपालभाति सहितानि षटकर्माणि प्रचक्यते धौति वस्ति नेति त्राटक नौली कपालभाति। ये 6 कर्म जो है षटकर्म, यौगिक षटकर्म, ये हठ योग में है जिसका फाउंडर महायोगी गोरखनाथ जी हैं और ये पतंजलि योग में नहीं है। 10 प्रकार की मुद्रा, महामुद्रा, खेचरी मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, शक्ति चालन मुद्रा, महाभेद मुद्रा, महाबंध मुद्रा इत्यादि जो 10 प्रकार की मुद्रा है, ये मुद्रा का फाउंडर गोरखनाथ जी हैं, पतंजलि नहीं है। पतंजलि योग में ये मुद्रा नहीं है। 3 प्रकार के बंध जो हैं, मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध, ये बंध हठ योग में है जिसका फाउंडर गोरखनाथ जी हैं, पतंजलि योग में ये नहीं है। और ध्यान धारणा समाधि जो है पतंजलि योग में है, गोरखनाथ योग में भी है। तो ध्यान पतंजलि ने, गोरखनाथ जी ने, संक्षिप्त में बता देता हूँ। गोरखनाथ जी ने कहा जो मेडिटेशन जो है 4 प्रकार के मेडिटेशन है। मैं समाप्त करता हूँ, शीघ्र समाप्त करता हूँ। गोरखनाथ जी ने कहा 4 प्रकार के मेडिटेशन है। मेडिटेशन ऑन फिजिकल बॉडी, पहले मेडिटेशन ऑन फिजिकल बॉडी, ये मैंने बिगिनिंग स्टेज में। मेडिटेशन ऑन चक्रज, शरीर के अंदर 6 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाथ चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, ये 6 चक्र का ऊपर मेडिटेशन होता है। ये 2 नंबर मेडिटेशन है। 3 नंबर मेडिटेशन ऑन प्राणवायु, प्राणवायु को देखना है। जो जप करते हैं, सब लोग जप करते हैं, नाथ संप्रदाय में अजपा होता है। अजपा नाम गायत्री योगी नाम मुख्यदायिनी अस्या संकल्प मात्रेण नर पापै विमुच्यते। अजपा गायत्री, ये नाथ संप्रदाय में अजपा गायत्री जप करते हैं। हंस सोहम जप करते हैं, श्वास के साथ साथ जप चलता है। 6 दिवारात्रौ सहस्राणि कविंशति हंसम तुम मंत्र जीवो जपति सर्वदा। श्वास 21,006 बार श्वास चलता है दिन भर 24 घंटा में, तो 21,000 हंस सोहम जप चलता है। ये हंस सोहम मंत्र जप करते हैं नाथ संप्रदाय में। इसका बहुत व्याख्या है, अभी टाइम नहीं है, केवल इतना ताले ताले हंस मंत्र जप होता है, ये नाथ संप्रदाय का साधना है। और तो ये ध्यान का बारे में, श्वास का ऊपर ध्यान। पहला मेडिटेशन ऑन फिजिकल बॉडी, सेकंड मेडिटेशन ऑन चक्रज, डिफरेंट चक्रज, थर्ड मेडिटेशन ऑन श्वास वायु, लास्ट है मेडिटेशन ऑन माइंड इट सेल्फ। मेडिटेशन ऑन माइंड इट सेल्फ, जस्ट वॉच योर माइंड थ्रो योर माइंड। साक्षी रूप से मन को देखना, साक्षी ध्यान है। ये वेदांत में भी है, जैन लोग भी इसको एक्सेप्ट करते हैं, बौद्ध लोग भी एक्सेप्ट करते हैं। साक्षी ध्यान, साक्षी रूप से मन को देखना, मन का एक्टिविटी को, मन का वृत्ति को देखना है। तो ये नाथ संप्रदाय का कंट्रीब्यूशन। और एक बता देता हूँ, साहित्य में, मराठी साहित्य में नाथ संप्रदाय का काफ़ी अवदान है। राजस्थानी साहित्य में, हिंदी साहित्य में, उड़िया, बंगला, आसामिया साहित्य में नाथ संप्रदाय का काफ़ी अवदान है। गोरखनाथ जी का एक वाणी है। गोरखनाथ जी ने कहा, मरो हे योगी मरो, मरण है मीठा, तिस मरण मरो, जिस मरण गोरख मरी दीठा। मरो हे योगी मरो, हे योगी लोग तुमको जल्दी जल्दी मरना है। कैसे मरना है ना, साधारण मनुष्य जैसे मरता है, योगी ऐसे नहीं मरता है। योगी का मरण भिन्न रकम है। कैसे ना, यू मस्ट डाई बिफोर योर डेथ। यू मस्ट डाई बिफोर योर डेथ मीन्स बिफोर द डेथ ऑफ योर फिजिकल बॉडी योर माइंड मस्ट डाई। मन का मृत्यु होना चाहिए शरीर का मृत्यु होने से पहले। मन का मृत्यु ही असली मृत्यु है। मन में कामना, वासना, आसक्ति इत्यादि है। मन का मृत्यु हो जाने से, मन शांत हो जाने से, मन शून्य हो जाने से कामना, वासना, आसक्ति सब समाप्त हो जाता है। चित्त वृत्ति निरोध हो जाता है, मन शून्य खाली हो जाता है। तो मनुष्य जब मरता है, साधक मरता है, तो पुनर्जन्म न विद्यते, और पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि कामना नहीं, वासना नहीं, आसक्ति नहीं, कुछ नहीं है। इसलिए पुनर्जन्म न और पुनर्जन्म नहीं होता है, मोक्ष मुक्ति हो जाता है। मन का यदि मृत्यु नहीं हुआ, शरीर का मृत्यु हो गया, फिर पुनर्जन्म होगा, क्योंकि मन में कामना वासना रह जाता है। तो गोरखनाथ जी का ये वाणी है। और एक वाणी बता करके समाप्त करता हूँ। गोरखनाथ जी ने कहा, हसीवा खेलीवा गाईवा गीत, दृढ़ करी रखी अपना चित। ये उड़िया भी है, बंगला में है, आसामिया है, हिंदी है, सब लोग समझते हैं ये अपना अपना भाषा। हसीवा खेलीवा गाईवा गीत, दृढ़ करी रखी अपना चित। हसीवा खेलीवा रहीवा रंग, काम क्रोध न करीवा संग। हसीवा खेलीवा धरीवा ध्यान,
अहर्निशि कथिबा ब्रह्म ज्ञान हंसे खेले न करे मन भंग ते नहीं चल गोरखनाथ के संग। हंसीवा खेलीवा रहीवा रंग, हंसो खेलो सब कुछ करो, लेकिन रहीवा रंग काम क्रोध न करीवा संग। काम क्रोध को दमन करना चाहिए, काम क्रोध से दूर रहना चाहिए। हंसीवा खेलीवा गाईवा गीत, दृढ़ करी रखिए अपना चित्त। हंसो खेलो सब कुछ करो, लेकिन अपना मन को दृढ़ रखो, स्थिर रखो। हंसीवा खेलीवा धरीवा ध्यान, अहर्निशि कथिबा ब्रह्म ज्ञान, सब समय ब्रह्म ज्ञान चर्चा करना चाहिए। गोरखनाथ जी ने कहा जिसका मन स्थिर है, जिसका मन चंचल है, अस्थिर है, वो गोरखनाथ जी का साथ नहीं रह सकता है। जिसका मन स्थिर है, शांत है, धीर है, वही केवल गोरखनाथ जी का साथ रह सकता है। ये साहित्य में, हिंदी साहित्य में, बंगला साहित्य में गोरखनाथ जी का अवदान, मैंने कहा ना 4 क्षेत्र में नाथ संप्रदाय का अवदान है। योग, तंत्र, साहित्य और आयुर्वेद, ये 4 क्षेत्र में नाथ संप्रदाय का अवदान है। तो ये जो आपका आज जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। मैं तो, मेरा यहाँ आश्रम है अगरतला में, मैं हर साल आता हूँ। मैं टिकट बना लिया था 9 तारीख को आने के लिए, तो कुलकर्णी जी मुझे टेलीफोन किया, आप 9-10 तारीख को आपको रहना है मीटिंग में। तो मैंने कहा मैं तो टिकट बन गया, 9 तारीख तो मैं नहीं रह सकता हूँ, 9 तारीख मैं आ रहा हूँ अगरतला, मैं 10 तारीख मीटिंग में अटेंड करूँगा। तो मेरा एक सौभाग्य है, आप लोग को दर्शन मिला। तो ये जो संस्था है, इसका बारे में मुझे कोई पता नहीं था, गोस्वामी जी ने मुझे सब बताया। बहुत अच्छे संस्था है, अच्छे काम कर रहे हैं। मैं आशीर्वाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप लोग आगे बढ़े करें, भविष्य में कार्यक्रम करने से मुझे बुलाएंगे तो मैं आऊँगा। तो ये करके मैं इतना कर मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Now I would like to request Rami Niranjan Desai ma'am. It is such an honor and privilege for me to be here amongst all of you today, especially in this beautiful state of Tripura. I have been to Tripura before, many, many years ago, almost about 14-15 years ago, after the very tragic murders of Shanti Kali Maharaj. And I think why this event is such a landmark event is because it's not in Guwahati. I think it's very important to start doing events in other parts of the Northeast to draw attention to cities like Agartala, who have changed so much since I came here last. As a researcher, when I came here 14 years ago, we had to even research very carefully. Today, the fact that we can have these deliberations, we can have these discussions openly, talk about our challenges openly without fear, shows us how far we've come. And I think also drawing attention to this change and the development that's happened in these cities really shows us how we can display the kind of events that we can do here, especially events like this of great magnitude. I'm very impressed, and great scale. For this opportunity that I have to be here amongst all of you today, I would sincerely like to, right at the outset, thank Amarvani Events Foundation, India Moon Media, the Department of Tourism, Government of Tripura, so many of my elders here and people I've learned from, my mentors, but also Dr. Suresh Devbarman and Anish, who I've been seeing running around and working very hard to put this together. Let me also take this opportunity to say that it's a very humbling experience for me to be on a panel like this, a panel that I have known for a very long time. Sandeep ji, somebody who has been a point of reference for me for many, many years, all throughout the time that I have attempted to study the Northeast. He has been somewhat of a mentor figure. Professor Sukhdev Sharma, who I have had the opportunity to co-edit 2 volumes of books on the Northeast, and one being on Rajshri Bhagya Chandra, very, very well-researched and important books. Atulji, is such an expert. And of course, I'd like to thank our moderator, Dharmguru Shri Gautamji, for really taking out the time and presiding over this panel. For me, this is a very humbling experience.
But as we've already been given a warning about our time, and we must keep to our time, without much ado, I'd like to really get to the topic of our panel, which is challenges before our faith and traditions in Northeast Bharat. Now, the challenges are many, and I think a lot of us who have been scholars in this region, who've attempted to research this region, if I may say so, we might not have a lot of consensus on a lot of the issues. But I'll take the liberty of saying that if there is one consensus that we have, it is based on the fact that the challenges faced by our faith and traditions in the region are extremely complex. They are multidimensional, they are intersectional, and they are interdependent like nowhere else in the country. I have had the opportunity to do some research in the Northwest frontier as well. And with all due respect to the Northeast frontier and the people of the Northwestern frontier, I would like to say that a lot of the issues there, and we've had a lot of media attention there, a lot of the issues there can be seen in exclusivity. In the Northeast, you cannot see issues in exclusivity. The issues are all codependent. There is a gamut of issues, geopolitical interest in this region. There is security threats from multiple dimensions, insurgency-led gunpoint conversions. These are facts of life. We've had bad policies. We've had isolationist, exclusionary policies. We've had a colonial impact that has had very prolonged emotional after effects, which we still sort of contend with, And for me to talk about the challenges that we face, these challenges, I will have to talk about a gamut of all these things because I cannot talk about it in isolation. So today, what I propose is I talk about what I consider the meta challenge, the challenge from within. We tend to look at the threats, we tend to look at, the exterior forces. But I think it's really important to look at what our responsibilities are, what can we do, and what our own challenges are. And one of the first challenges I think that I would like to look at is to really look at our civilizational continuity. We have to ask ourselves this question: how much do we know our civilizational continuity? How much have we really studied it in depth? What is our civilizational narrative? And if there is one, do we know where the Northeast region fits into it? Do we know where the people of the Northeast region fit into this narrative? And if the people, then do we know what the faith and traditions, what place they hold in this narrative? The problem is, I find, that, of course, all of you are scholars and all of you are experts on this. So I'll remove yourself from what example I'm going to give here. But if all of you, if you've come from all over the country, if you were to travel to Pune or Delhi and ask a layman, what do you think of the Northeast? The general perception would be that it's remote, it's tribal. Then you ask that person, okay, it's tribal. What do you mean by tribal? The answer they'll grapple around with some answer saying that it's something to the effect of people being primitive. What does people being primitive mean? People being primitive means that their ideas are not involved, that their societal frameworks are not involved, their religious frameworks are not evolved, that on the line of evolution, they are somewhere at the bottom. Now, if this is the perception that we usually get from the larger population, I think we really do have a civilizational narrative issue on our hands, and which is really, really sad, because where we come from, where our civilizational narrative comes from, we don't segregate like this. For us, it's a continuity. We've never looked at tribals as being different, At the end of the day, even the words like tribal, indigenous, these are not natural to our vocabulary. But yet, these are the most commonly used
definitive words. There is this great need for us to standardize. Again, standardization is a Western concept, has nothing to do with us. Our civilization thrives on diversity. And somehow, somewhere, we've forgotten to respect that or to understand it in the right context. And I think this is possibly the greatest challenge that our faith and traditions face is our shaky foundation on the understanding of our own civilizational narrative. My second challenge here that I'd like to put forth is the challenge of if we do want to study it in the right perspective, what are our tools? Do we have the right tools to study it? Because as far as I'm concerned, and I'm a student of anthropology of religion, I am a student of Christian theology, let me tell you, we still use these subjects. Our frameworks, our subjects, our theories, the people that we look up to are all from the West. Anthropology itself was a subject that was created by the colonialists to look at the other. It was never created from the inside. One of the first people who came to the Northeast were the anthropologists. The British sent them to study us as the natives. So we today, unfortunately, are still looking at these people and saying, using theories and frameworks and saying that, they are the other. Therefore, the kind of segregation that psychologically has come in between us and a lot of our own people. Let me give you an example. Our education system, our systems of knowledge had the folklore system, the oral tradition. Oral tradition was a established system of passing down knowledge. We've completely sort of wiped it out. Yes, there have been people and scholars who've been trying to revive it, but is it mainstreamed? It isn't mainstreamed as yet, and we have no excuse for it. Why should it not be mainstreamed? What sort of standards of knowledge systems are we following which are not suited to our civilizational diversity and have no respect for our ancient systems of knowledge? There used to be, what were they called? The great storytelling tradition of the Kathavachaks. Where is that now? So I think this sort of respect for our folklores, this sort of respect for our own, systems of education is very important. And it is a challenge to us because where is our scholarship that are challenging these theories, challenging these frameworks? These theories and frameworks and subjects that we use to study ourselves are the same subjects that have brought about words like terminologies like indigenous, native, tribal. These are really new words. They were included by the colonialists in the census, in the early census. Animism. Suddenly now we believe that animism is a religion. It's not even a word from Bharat. We didn't have this in our vocabulary. Moving on, the third challenge. And I know that we're short of time, so I'll keep this really short. Our third challenge, I believe, is our most important challenge. That is the meta challenge. The meta challenge means the challenge of referring to ourselves. How do we refer to ourselves? Have we understood that we need to move away from this sort of labeling, this rampant labeling and, borrowing from the West to sort of give ourselves identity? Have we moved away from that? Of course, I see a lot of scholarship today, yet there's a lot of work to be done. Again, I'll give you an example. More often than not, I hear nowadays people using words like pagans. We are pagans. Why are we pagans? Who has decided we are pagans? What does paganism mean? The people using it, have they read the literature? Have they read early antiquity literature? Have they read pagan literature? Have they read Porphyry, Celsus, Tertullian? No, they haven't. Because if they would have read that, the pagans themselves, Celsus himself in his book said, the real faith lies with the Indians and Assyrians.
So if the pagans saw us as different and as an elevated civilization, then why would we want to belittle ourselves as pagans? Paganism also, one must understand, was never a religion. It was only in context A to the Roman Empire and in context to early Christianity. Paganism comes from the word paganus, which means rural. Now, what does this sort of segregation have to do with us? Rural, non rural, urban? Does that mean that if you're rural, you're uncivilized? If you're urban, you're civilized? That is a complete antithesis of what we believe. Because, on the contrary, what we believe is that attachment to decadence or material attachment is a form of lower evolution. The more detached you are, you're of higher level evolution. But what has happened with the rampant usage of these labels and the misunderstanding of these labels, we now equate being civilized, being modern, being upmarket by the Western standards. And I think these are things that we must really, really, look at, think about. And this is our greatest challenge, that we lack rigor. I'd love to say lovely things and say that, we have great scholarship, which we do. But there is a certain amount of rigor that we lack. And unless we have that rigor, unless we have clarity of mind, and unless we look at things from our own perspective and not an outsider's perspective, the chances are that our challenges will only increase. Whereas what our focus should be, to create our own narrative based on our own foundations and hopefully preserve the kind of traditions and faiths that have been preserved by the people against many, many odds and challenges, to leave for our children just the way our ancestors persevered and broke through all odds to leave these wonderful faiths and traditions for us. With that, I would like to conclude. Thank you very much. Thank you very much, ma'am. It was a wonderful speech. Now I would like to request Atul Deburma sir to please say something over the matter. सबको नमस्कार। आज जिस विषय पे यहाँ पे चर्चा हो रही है, मैं जो इंग्लिश का जो टर्मिनोलॉजी था उसका मैं सीधा हिंदी अनुवाद किया और इसमें मैं त्रिपुरा के संदर्भ में लिया, द फेथ एंड ट्रेडिशंस एंड इट्स चैलेंजेस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट भारत। आस्था एवं परंपरा, उसका चुनौतियाँ, पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में। और यहाँ पे मैं, क्योंकि मैंने जो सुना पिछले 2 दिन से चल रहा है ये जो संगोष्ठी, पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न राज्यों का भी बात हुआ है, मेरे पहले भी बात हुई है, तो मैं यहाँ पे त्रिपुरा के संदर्भ में ही थोड़ा कुछ बोलूँगा। चुनौती क्या है ये जानने से पहले जो हमारा आस्था और परंपरा, खास करके जो त्रिपुरा के आस्था और परंपरा, इसके बारे में मैं थोड़ा कुछ बोलूँगा। जिसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में, पूर्वोत्तर भारत के बारे में, बृहत्तर भारत का तथा कथित मेनलैंड भारत का क्या धारणा है, ये हम लोगों को, जो हम नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है। मैं पिछले 30 साल से त्रिपुरा के बाहर में हूँ। 38 years of my life I have been out of my state, so I have been living there, integral part of mainland India, and quite often in different discussions or in different sorts of dialogue we got to know what is the feeling of the people of the other side of the India other than north east. तो जनरली ये होता है कि जो आम जनता, शिक्षित महल हो
या अशिक्षित हो, गांव वाले हो, तो लोगों को ये लगता है कि पूर्वोत्तर के जो भारत है उसमें तो वही लोग रहते हैं जो कीड़े मकोड़े खाने वाला, चूहे सांप खाने वाला, इस टाइप के एक नैरेटिव्स भारत के उस इलाका में दिया गया, और जो वहाँ के लोग ये अवधारणा लेके बैठे हैं। हालांकि ये जो अवधारणा अभी जैसे जैसे टाइम बीतते गया तो ये भी परिवर्तन होते रहा है और हो चुके हैं। तो त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों में से भी अलग है। त्रिपुरा का हिस्ट्री आज का नहीं है। हमारे जो राजमाला है उसमें 5000 का हिस्ट्री इतिहास उसमें वर्णित है, और महाभारत के युग से इसका हम वर्णन मिलते हैं। तो त्रिपुरा के जो परंपरा है, आस्था है, वो भी 5000 साल पुरानी है, और तब से हम उसी परंपरा का, उसी आस्था का, उसी विश्वास का, उसी पूजा पद्धति को हम अभी अनुसरण और अनुकरण कर रहे हैं। और इसमें जो हमारा त्रिपुरा में जब भी हम चैलेंजेस की बात करते हैं, एक बात यहाँ पे जब विदेशी शक्ति या विदेशी जो आस्था या विश्वास जो आए हैं, वो लोग हमेशा यहाँ के एक ही बात पूछते हैं कि ये जो आप जो भी पूजा पद्धति फॉलो कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, वो क्या आपका है? ये एक सवाल हमारे जो युवकों को पूछा जाता है, और जिसमें हमारे युवक युवतियाँ उसका जवाब नहीं दे पाते, और उससे जो है वो लोग उन्हीं के बातों पे बहला जाते हैं और धर्मांतरित हो जाते हैं। तो इस संदर्भ में हमने कुछ शोध किया दिल्ली में जब थे, तब वहाँ के आर्काइव्स में, नेशनल आर्काइव्स, और उसमें भी जाके देखा और मैंने स्टडी की इस बारे में। तो इसमें हमने देखा कि जो, मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा क्योंकि इसको लेकर मैं करीब आज से 10-15 साल से रिसर्च किया है, और त्रिपुरा के गांव में जाके और अगरतला में बहुत जगह पे मैं बहुत सारे सेमिनार, वर्कशॉप, और हम लोग यहाँ पे एक तरह का वर्कशॉप करते और ट्रेनिंग, इन हाउस ट्रेनिंग 7 दिन का, उसमें रेसिडेंशियल ट्रेनिंग भी करते। यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं बहुत विद्वान है, हमारे डॉक्टर शौरिश देव बर्मन है, हम तो उसको त्रिपुरा के एक तरह से एक एनसाइक्लोपीडिया कहते, उनको भी हम लेके बात करते। तो उस बात को मैं इतना नहीं दोहरा पाऊँगा क्योंकि समय के पाबंदियाँ है यहाँ पे। तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि त्रिपुरा में सबसे पॉपुलर जो मूर्ति है, पूजा है, वो दुर्गा पूजा है। और दुर्गा पूजा को हम लोग कॉकबोरोक में ओसामुताई कहते हैं, ओसा कहते हैं। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि दुर्गा आपका पूजा है क्या, आपका देवता है क्या? तो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, जो आम लोग हैं, बच्चे हैं, यूथ है, तो कहते नहीं, क्योंकि जवाब नहीं दे पाते। लेकिन मैंने इसका भी एक शोध किया तो पाया कि ये दुर्गा का जो हम ओशा कहते हैं, वो ओशा शब्द भी ये संस्कृत से आया हुआ, और ये जो ओशा ये आया है ओशी शब्द से, जो दुर्गा का एक अस्त्र है। और उसी नाम से ये देवी दुर्गा का जो सहस्त्र नाम है उसमें एक नाम है ओसो, ओसो से असा हुआ। और राजस्थान में एक मंदिर है, दुर्गा माँ का मंदिर है, उसमें उसके अशिया माता का मंदिर कहा जाता है। मैं खुद भी वहाँ विजिट किया, वहाँ गया था, क्योंकि अशी धारण करने वाले जो देवी है वही ओशो है, और कॉकबोरोक में ओसी हुआ है। और इसकी जो वर्णन आज से 1000-2000 साल पहले कनिष्क का जमाना का एक मूर्ति है, मुद्रा है, उसमें पाया गया, जिसमें उसका ओशो नाम से दिखाया गया, और वो पंजाब का एक म्यूजियम में अभी भी रखा हुआ है। तो क्षत्रिय होने के नाते त्रिपुरी लोग युद्ध से पहले या कहीं पे भी जाने से पहले माँ दुर्गा का पूजा करना पड़ता है, और ये आवश्यक था। और ये जो दुर्गा या ओशा, ये हमारा संस्कृति में इतना गहरा मतलब संबंध हो चुका कि हमारा जो परंपरा, हमारा जो फोक टेल है, उसमें भी ये ओशा का जो वर्णन है, और हमारा जो पूजा पद्धति, और ये भी हमारा ही एक अलग तरीका है, जो मेनलैंड इंडिया में जो करते हैं उस तरीके से हम नहीं करते।
तो इस बारे में लोग जब कहते हैं कि नहीं ये तो आपका नहीं है, फिर मैंने उसका स्टडी किया, देखा कि आज के संदर्भ में जो दुर्गा पूजा हो रही है हमारी भारतवर्ष में, ये कब से शुरू हुआ। मैंने देखा कि ये 1664 में ताहिरपुर के राजा पहले ये दुर्गा पूजा जो मॉडर्न तरीका से शुरू किया था, वहाँ के राजा कोच राजा ने। लेकिन त्रिपुरा के संदर्भ में अगर हम देखें तो दुर्गा पूजा आज का नहीं है। जो हमारा अभी यहाँ पे देवता मुरा, छवि मुरा भी जिसको कहते हैं, वहाँ पे एक पत्थर में मूर्ति है, लोग वहाँ जाने के लिए तड़पते हैं, जाते हैं। एक हिस्ट्रिकल के साथ साथ वो एक रिलीजियस साइट भी हुआ है, वो एक टूरिस्ट साइट भी हुआ है। तो वहाँ पे अगर हम जाते हैं, वहाँ पे अगर देखते हैं देवी दुर्गा का मूर्ति, तो उसमें बिल्कुल ही हमारी जो त्रिपुरी जनजाति का जो चेहरा है बिल्कुल वही है। और वो आज से 1300 से 1400 साल का पुराना मूर्ति है। 1300-1400 साल का वो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में भी वो उसका स्टडी हुआ, उन लोगों ने भी देखा है कि ये 700 to 800 AD में उसका उस पत्थर का मूर्ति का खनन हुआ है। तो उस हिसाब से भी देखें तो कम से कम हम 1400 साल पहले से ही दुर्गा देवी का हम पूजा कर रहे हैं। और जबकि वर्तमान का जो दुर्गा पूजा है वो अब 600, 400, 500 साल का पुराना है। तो ऐसे पौराणिक जो भी देव देवी है, जैसे कि शिव है, पार्वती है और गणेश है, ये 3 के उपासक थे हम लोग, और सदियों से 5000 साल पुराना। और हमारा जो 14 देवता है, उस 14 देवता में भी ये जो 14 है उसमें से सिर्फ 3 देव देवी जिसको साल भर में पूजा जाता है। बाकी 14 देवता सिर्फ जो खर्ची पूजा है जो 7 दिन का होता है उसी दिन पूजा जाता है। बाकी 3 देवता उसमें शिव, पार्वती और गणेश, उसी का पूजा हो रहा है। लेकिन हम लोगों को फिर भी कहा जाता है कि आप लोग तो मूर्ति का पूजा नहीं करते हो, मूर्ति का पूजा तो वो लोग करते हैं जो मेन लैंड का है। लेकिन इसके साथ साथ हम अगर देखें सिर्फ माँ दुर्गा का ही नहीं, शिव जी का सबसे पुराना अगर मूर्ति है तो ऊनाकुटी में है, वो भी आज का नहीं है, वो भी 1400 साल 1300-1400 साल पुराना मूर्ति है, वो भी हमारा ही है। तो ऐसे हमारा जो 14 देवता उसमें भी मूर्तियाँ हैं, वो भी हम पूजा कर रहे हैं। लेकिन जो विदेशी जो ताकत है उन लोग हमको यही पूछते हैं कि मूर्ति का पूजा तो आपका नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग एक के बाद एक इस तरीके का एनालाइज करते, तो हमारी जितना भी विश्वास है, पूजा है, आस्था है, ये सब जो बृहद भारत का जो पूजा पद्धति है, जो देव देवियाँ है, वो एक है और अभिन्न है। नाम थोड़ा अलग हो सकता है और जो पद्धतियाँ थोड़ा सा अलग हो सकते हैं। मैंने आज से 4-5 साल पहले दिल्ली से कुछ मूर्तियाँ माँ देवी दुर्गा माता की मैंने मूर्ति एक मंदिर में दान किया था। मैंने आग्रह किया था कि इसमें बलिया ना हो, बलि प्रथा ना हो। लेकिन मैंने 2-3 साल का बाद जब मैंने वहाँ पे आया तो पाया कि वहाँ पे खून पड़ा था, दूर मंदिर का थोड़ा दूर बाहर। तो मैंने पूछा कि आप लोग इसमें पूजा के साथ साथ बलि भी शुरू कर दिया। बोले क्या करें, लोग तो चाहते हैं, हम तो नहीं चाहते, वो लोग भी नहीं चाहते, जो वहाँ पे पुजारी है, सन्यासी है, वो भी नहीं चाहते। लेकिन लोगों का आस्था है, लोगों का विश्वास है, हम क्या करें। फिर मैंने भी सोचा, उसका एनालिसिस भी किया, और कहीं पे मैंने किसी व्यक्ति का बहुत विद्वान जन का उनका भाषण भी सुना। तब फिर मैंने भी उसको एनालाइज किया कि हम बिना मतलब की जो पद्धति है उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते, समालोचना करते कि ये क्या है, पूजा में पूजा का सामने बलि है, ये है, वो है, बकरा है, बत्तख है या मुर्गा है। तो हमने देखा कि लोग जो विश्वास कर रहे हैं उसको करने दीजिए, हम क्यों उसमें अपना ही मत उसमें क्यों देना चाहे। क्योंकि हमारे उसमें कहते हैं कि नहीं, अभी 21वीं शताब्दी है, 21st सेंचुरी है, इसमें भी क्या हम प्रिमिटिव में रहेंगे। खास करके जो विदेशी संस्कृति है, विदेशी धर्म है, वो लोग कहते हैं क्या है ये। तो मैंने वो उन लोगों को समझाता हूँ। आप देखिए ऐसा नहीं है। आज अगर हम अब्राहमिक रिलीजन से उत्पत्ति हुआ 2 धर्म की बात करते हैं, एक तो इस्लाम है, एक ईसाई है।
अभी इस्लाम में हम सब जानते हैं कि हर साल उनकी ईद जब होती है तो इतना पशु बलि होता है, इतना उसमें गाय बलि होती है, करोड़ों का होता है। हमने देखा कि जो ढाका का शहर में पूरा खून का नदी है, खून का नदी हम लोगों ने देखा, वो फेसबुक में, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में देखा है, लेकिन फिर भी उसको तो कोई आलोचना नहीं करता, उसके लिए तो कोई कहता नहीं है, कोई फेसबुक या कोई सोशल मीडिया में नहीं होता। उसी तरह जब यूएस में या और भी क्रिश्चियन कंट्रीज में जब थैंक्स गिविंग होता है, उस दिन उसके सिलसिले में इतना सारा जो टाड़की मुर्गी होते हैं या उसमें जो शुकर होता है, इतना बलिया चढ़ता है, करोड़ों, लेकिन फिर भी उसको तो हम नहीं कहते कि ये प्रिमिटिव है। तो हम लोग जब कर रहे हैं तो हम क्यों अपने आप को उसका विरोध में जाए। तो मैंने अपनी जो आचार्य है, पुजारी है, उन लोगों को भी पूछा कि आप लोग बलि जब देते, बलि कैसे देते। तो बलि देने में भी इतना उसमें दैव है, डिवाइनिटी है। वो कहते कि जो अभी आप इस जन्म में पशु का रूप में आपका जन्म हुआ, ये आपका कर्म का फल था, और इसमें जो है आपका जो माता पिता, आपका जो पूजा, आपका जो भगवान है, अनुपक्षी राजा है, उसको हमने परमिशन लिया, उसका अनुमति हमने ली, आपका माता पिता का हमने अनुमति लिया, और आपको जो है इस बार इस पशुत्व से, एनिमलिज्म, जो आपने पशु का रूप में जन्म लिया, उसका मुक्ति देने के लिए हमने आपको भगवान का सामने अर्पण किया, समर्पण किया, और आप इससे पशु से मुक्ति पा जाओगे, मुक्ति मिल जाएगा। इस तरफ से समर्पण करके, मंत्र पाठ करके फिर उसका बलि चढ़ा जाता है। तो तब मैंने भी सोचा कि ऐसा तो कुछ नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने तो वही कहा कि अर्जुन को जब युद्ध में भेजा था, युद्ध के लिए जब प्रेरित किया था, बोला था कि आप आत्मा का तो आप ध्वंस नहीं कर सकते, वो तो उसको तो ना काट सकता है, ना जला सकता है, ना भिगा सकता है, ना सूखा सकता है, आत्मा का तो ध्वंस ही नहीं है। तो फिर अर्जुन को जब युद्ध में कहा गया कि आप किसको मार रहे हो, आप तो किसी को भी नहीं मार रहे, तो फिर हमने भी वही सोचा कि ठीक है, हम मुर्गी या बकरा काट रहे हैं तो उसको भी तो हम कहाँ काट रहे हैं, उसका शरीर को काट रहे हैं, उसका आत्मा का तो ध्वंस नहीं हो रहा। तो इस तरीके से हम लोग इनको समझाते हैं। और जो चैलेंजेस है, जो आज चुनौतियाँ जो है, ये आज का नहीं है। हमने देखा जो हमारा परंपरा पे आज से 2-2.5 साल पहले से ही हमारे जो परंपरा पे एक परिवर्तन का, उसका एक प्रभाव आया था। जैसे कि 2.5 साल पहले भगवान बुद्ध का जब अवतार हुआ, तब भी त्रिपुरा राज्य में हमारी जो हिंदू परंपरा या सनातन परंपरा, बलि प्रथा था। भगवान बुद्ध की जो परंपरा से ही है, भारत में जो भी सनातन हिंदू परंपरा था उसमें भी बलियाँ चढ़ती थी। वो खत्म हुआ भगवान बुद्ध की आने के बाद, उनकी अवतार के बाद ही। लेकिन त्रिपुरा में भगवान बुद्ध की जो भी प्रभाव आया था, जैसे बंगाल, आजकल जो पूर्व बंग या पश्चिम बंग जो भी था, उसमें भी उस वक्त पूरे के पूरे जो है धर्मांतरित होके वो सारे के सारे बुद्धिस्ट हो गया था, बुद्ध धर्मांतरित हो गया था। लेकिन त्रिपुरा तब भी नहीं हुआ। और आज से 800 साल पहले जब बख्तियार खिलजी आए थे, जब बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल को आक्रमण किया था, तब भी बंगाल के सारे के सारे लोग अपनी जो परंपरा बुद्ध धर्म छोड़ के फिर वो मुस्लिम धर्म हो गया। और लेकिन तब भी हमने अपनी परंपरा को नहीं छोड़ा। 500 साल पहले मुगलों ने फिर शुरू किया, तब भी हमारे राजाओं ने इन मुगलों से, इन जो इन्वेडर्स से, उनसे लड़ते रहे। उससे पहले, उसके बाद, जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने भी इसमें कहा कि मणिपुर में वैष्णव धर्मों का प्रभाव हुआ, फिर उनकी उसमें धर्म का शोधन हुआ या उसमें संयोजन हुआ। लेकिन त्रिपुरा में भी इसका प्रभाव था, लेकिन त्रिपुरा का लोग वैष्णव धर्म में उतना इंटरेस्ट या उतना धर्मांतरित नहीं हुआ था। एक हिस्सा जो कि हमारा चतुर्वर्ण आश्रम है, जिसमें ब्रह्मचारी, फिर गार्हस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। हमारी त्रिपुरा में ये प्रथा था कि जैसे ही वो वानप्रस्थ का उम्र 50 साल से ऊपर चला जाते,
वो फिर वैष्णव धर्म में धर्मांतरित हो जाता है। एक ही घर में माता पिता वैष्णव धर्म का पालन करते, लेकिन अपना पुत्र पुत्रियाँ जो भी अपना बेटा बेटियाँ वो सारे फिर शक्ति और शिव का उपासक होते थे। तो ऐसे हमारा उसमें चलते थे, लेकिन उसमें कोई कभी भी कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष नहीं था। और साथ ही साथ जब 200 साल पहले अंग्रेजों ने जब आया तब भी हमारा त्रिपुरा में इसका बहुत प्रयास हुआ और हमने तब भी नहीं हुआ। और त्रिपुरा के राजा ने जो मिशनरीज आए थे उनको हमने मिजोरम में भेज दिया। हमारे यहाँ धर्म है, संस्कृति है, हमारा पूजा पद्धति है, हमारा देव देवी है, हमको उसका ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से 200 साल पहले भी 200 साल तक अंग्रेज के राज के ज़माना भी हमने अपना धर्म को बदला नहीं है। लेकिन जो है अभी पिछले 60 साल से जब राजा का ज़माना ख़त्म हो गया, फिर हम लोगों ने भारत का जो बृहद भारत में हमने योगदान किया, इंटीग्रेशन हुआ, एसिमिलेशन हुआ, तब से जो है हमारी त्रिपुरा में जो हमारा आस्था, हमारा जो परंपरा, उसमें चुनौतियाँ आ रहे हैं। और इस चुनौतियाँ में हमने देखा कि हमारे जो लोगों ने, जैसे मेरे पूर्ववर्ती बहुत सारे वक्ताओं ने भी ये कहा कि हमने इसके लिए किसी का मदद के बिना अभी भी हम डटे हैं, लड़े हैं और इस संघर्ष में हमने सफल भी हुए। त्रिपुरा में अगर हम देखें अभी भी हमारी जो कन्वर्शन या क्रिश्चियन या मुस्लिम, ये दो धर्म में, मुस्लिम में तो लगभग है ही नहीं, क्रिश्चियन में थोड़ा कुछ हुआ, उसमें एलुरमेंट है, थोड़ा कुछ उसमें पैसे देकर, लालच दिखाकर, धमका के, डरा के और शिक्षा के नाम पे थोड़ा कुछ हुआ है। लेकिन इसके बाद भी त्रिपुरा में अभी भी हम लोग, हमारे जो है 90% से ऊपर हम लोग अभी भी हिंदू परंपरा या अपना जो आस्था विश्वास जो हम पूर्वजों से मिला उसी को हम पालन कर रहे हैं। और हमें विश्वास है कि हमारी जो परंपरा इसको कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा, हमारा जो चुनौतियाँ उसको ख़त्म नहीं कर पाएगा, हमारे जो विश्वास आस्था है उसको बदल नहीं पाएगा। क्योंकि हमने देखा कि जैसे मेरे पूर्ववर्ती वक्ता ने बोला कि 100 से ज़्यादा ऐसे बहुत सारे संस्थाएं पूर्वोत्तर भारत में आ चुका है, खड़ा हो चुका है, जो अपनी धर्म संस्कृति को बचाने के लिए निकल चुके हैं। और उसी सिलसिले में हमारे त्रिपुरा में भी ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं जो अपनी धर्म संस्कृति को बचाने के लिए खड़े हैं। और इस संदर्भ में अगर ऐसे वाली संस्थाएं और भी हमारे साथ दे तो हमें लगता है कि हम जो भी चुनौतियाँ हैं उसको हम पराजित कर पाएंगे। और मेरा तो ये विश्वास है, पीछे कुछ दिन पहले मीडिया में न्यूज़ आया कि इंग्लैंड का जो धर्म के जो रेशियो है, अभी वहाँ क्रिश्चियन, अपने आप को क्रिश्चियन बोलने वाले 46% पे आ चुका, लेस देन 50% दे क्लेम टू बी क्रिश्चियंस। तो जहाँ पे ये क्रिश्चियन धर्म का जन्म हुआ, जहाँ से विस्तार हुआ पूरे विश्व में, वहाँ ही अगर क्रिश्चियन धर्म का अभी ये हाल है तो हम क्या है? हम तो अभी कह रहे हैं कि 2000 साल से हम लड़ रहे और लड़ते जाएंगे और ये चुनौतियाँ को हम स्वीकार करते और आगे भी हम करते रहेंगे। और मेरे इतना ही आग्रह है कि यहाँ पे जो भी गुरु परंपरा है, यहाँ पे संत है, इन लोगों का और आप लोगों का सबका सहायता अगर मिलता है तो हम अपनी आस्था और परंपरा को हम बचा रख पाएंगे। और भारत तथा विश्व भारत में जो हमारा दोबारा गौरव हम अगर हासिल करना चाहते हैं तो ये जो मौका है, ये जो एक संगोष्ठी हुआ है, ये आगे भी होते रहना चाहिए। और हमारा ये आग्रह है, जब भी हमें ऐसा मौका मिलेगा हम ज़रूर आपके साथ रहेंगे। और इस तरीके का जो आज हमें यहाँ आमंत्रण किया, इसके लिए जो भी यहाँ आयोजक है, आयोजक को मैं धन्यवाद देते हुए सबको नमस्कार और मेरी बात को विराम देता हूँ। Thank you very much, sir. It was a wonderful session. I hope everybody here has enjoyed the session. Now, I would like to request Gautam Mishra ji to please say something over the sessions. सर्वप्रथम मैं श्रीमान संदीप कविश्वर जी ने जो कहा उसका एक जिस्ट बताना चाहूँगा। इन्होंने
जो सबसे बड़ी नैरेटिव है उसको बदलना मुश्किल है। भारत की परंपराओं से कट गया है। बाहर के लोग जो यहाँ आए, हमने मान लिया कि यह सत्य नहीं है। इन्होंने यह भी कहा कि जो नॉर्थ ईस्ट की परंपरा बहुत ही समृद्ध है। यहाँ के कुछ लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। इन्होंने अरुणाचल की एक पहाड़ की कहानी बताई, जिसमें इन्होंने यह कहा कि उस पहाड़ पे चढ़ने से पहले उन्होंने उस पहाड़ की पूजा की। जनजातियों ने भगवान की जब पूजा करते हैं और उनसे कुछ नहीं मांगते, यह भी इन्होंने कहा। जैसे कि हम प्लेन लैंड वाले हैं, ये हम लोग जब भी भगवान की, जैसे मैं अपना भी प्रेयर करता हूँ तो उसमें अवश्य कुछ ना कुछ मांगते हैं, परंतु यह जनजाति कुछ नहीं मांगते। एक विश्वजीत राजकुमार भी त्रिपुरा के मेरे परिचित हैं, उन्होंने भी यह बात कही थी, तो मैं समझता हूँ कि ये सही है। वसुधैव कुटुंबकम हम लोग बोलते हैं और ये लोग मानते हैं। नॉर्थ ईस्ट के राजा कभी भी मुगल से पराजित नहीं हुए। अंग्रेज़ों का जो मेन प्लान था वह यहाँ के कल्चर और ट्रेडिशन को समाप्त करने का था। अगर ये कल्चर और ट्रेडिशन को समाप्त करेंगे तभी हमारे ऊपर राज कर सकते हैं। इन्होंने बिरसा मुंडा जी के बारे में भी सब कुछ परिभाषित किया। जनजाति और गैर जनजाति आपस में मिलते हैं, जैसे कि मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, हर जनजाति में प्रेयर अलग अलग रूप से किया जाता है। और वहाँ बहुत सी अब नई संस्थाएं बनी हैं। अगर हम सभी के परंपराओं का सम्मान करेंगे तभी विश्व का कल्याण है। प्रकृति, भगवान और दूसरों के बारे में इन्होंने प्रकाश डाला। डॉक्टर सुखदेव शर्मा said about the challenges and faith on tradition of Vaishnavism. People thinks that its ritual system came from Bengal, but it's not true. In 1417, idol of Vishnu Bhagwan given by Myanmar to Manipur. Bishnupur first built temple still there in district Bishnupur. Last year they did prayer. It's under now archaeological system. He also focused on all the kings of Manipur and their ideas. King also started Ras Leela prayer in Manipur. Some prayer systems also came from Navadip and Puri. And all the prayers started by king. Peoples of Manipur, he also told about some kings' prayers introduced by them. Govind temple was built in 1776. Burma and Manipur started fight to get land from each other. Now big population of Manipur is also in Silchar because of the fight fight between Burma and Manipur. Peoples migrated to Kachar. They always say Jai Govinda Ji because still Govinda Ji with them. They will alive and strong. Basically, Govind Ji is everything for Manipuri, Vaishnav and other Samaj. Some missionaries entered inside Manipur, but they could not change one. Then they went to tribal area. He also emphasized on funding by churches. Earlier days, king used to travel to Radha Kund by waterways. He also told about Radha, how king started his journey to Radha Kund. From Manipur. On the way, he took 67 boats also and visited to Tripura for marriage of his girl. He could not reach to Radhakund because he died on the way. So his son went to Radhakund and did prayer and father afterwards. Now, Miss Ramini Ranjan Desai, she said to do all these types of events in all over the Northeast. So that, and she thanked Amarvani, Astalakshmi and everyone who worked hard for this program. Challenges before faith and traditions are very wide. She did lots of researches. All issues are geopolitical, insurgency, and people's path were changed on gunpoint.
She also emphasized on her civilization and understandings. She told about what people think about Northeast. They think it's a remote tribal. She told about that our plain land people are keeping the culture and civilization. And in the first challenge, in second challenge, she said we are different from Northeast land, which is not correct. We should respect for each other. New words were used as indigenous and tribal, remote, etc. On third challenge, she said Western culture and traditions are introduced that we have to understand, to somehow should understand, and scholars should write on this. Unless we look on our own perspective, based on our own thinking, we must tell our children keep going on our own tradition and culture. At the last, डॉक्टर अतुल देव वर्मा जी ने कहा कि आस्था और परंपरा पर अतुल देव वर्मा जी ने आस्था और परंपरा पर बोला. इन्होंने मेनलैंड और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बारे में कहा. एक धारणा है कि यहाँ के लोग कीड़े मकोड़े के खाते हैं और वैसे ही रहते हैं. इन्होंने 500 साल पुराने परंपराओं का जिक्र किया. राजमाला पुस्तक का भी पूरा वर्णन किया. क्योंकि यहाँ की पूजा पद्धति लिखित नहीं है, तो यहाँ के छोटे बच्चों के भोलेपन का सहारा लेकर इनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है. इन्होंने माँ दुर्गा के वर्णन किया. क्षत्रिय धर्म में युद्ध के समय जाते समय माँ दुर्गा का पूजा करते हैं. 1664 में ताहिरपुर के कोच राजा ने शुरू किया था. यानी कि यहाँ पर भी मूर्ति पूजा का वर्णन मिलता है, क्योंकि बाहर के लोग इन्हें यह कहते हुए मिले हैं कि आप लोग तो मूर्ति पूजा नहीं करते. 1300 साल पहले एक दुर्गा जी के मूर्ति के बारे में भी इन्होंने प्रकाश डाला, जिनका चेहरा त्रिपुरी ड्रेस में जो महिला होती है उनके तरह है. 14 देवता मूर्ति के पूजा के बारे में भी इन्होंने प्रकाश डाला. कुछ लोग यह कहते हुए पाए गए हैं कि मूर्ति पूजा यहाँ का नहीं है. उस पर उन्होंने उन्नकोटि मूर्ति के बारे में कहा. अपने परंपरा से जोड़कर उस रहना चाहिए, उसे नहीं बदलना चाहिए. उन्होंने एक मंदिर की कहानी बताई. बलि जो है वो पशुत्व से मुक्ति के लिए है, इसीलिए यहाँ पर बलि की जाती है. उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन का भी उदाहरण दिया. जब पूरे देश में बुद्ध भगवान का प्रभाव आया, यहाँ की परंपरा नहीं बदली. जब मुस्लिम में बदल गए लोग, उस समय भी यहाँ की परंपरा नहीं बदली. 200 साल पहले जब अंग्रेज मिशनरी आए, राजा ने उनको यहाँ नहीं रोका, उनको आगे भेज दिया, जो कि मिजोरम चले गए. 60 साल पहले कन्वर्शन शुरू हुआ है, पैसे से डराकर. फिर भी आज 90% लोग हिंदू ही हैं और अपने आस्था, विश्वास और परंपरा से जुड़े हुए हैं. अंत में उन्होंने इंग्लैंड के बारे में कहा कि जहाँ पर क्रिश्चियनिटी कम हो रही है और हमारे यहाँ बढ़ने की आशंका है. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much, sir. Now the session is open for questions from the audiences. मेरा क्वेश्चन डॉक्टर अतुल देव वर्मा के है. वो सर ने बोला जे पशु बोली, द सैक्रिफाइसिंग ऑफ गोड्स ड्यूरिंग वर्शिपिंग, इसका साथ आपका जो नया कोर्ट रूलिंग्स है ये संजोग करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. क्योंकि पशु बोली जो है हाई कोर्ट कलकत्ता, इवन सुप्रीम कोर्ट भी बंद कर दिया. आप कालीघाट टेम्पल में जाइए कलकत्ता में, वहाँ पे पशु बलि बंद हो गया. सो मेरा ये सवाल है, जब रिलीजियस डिस्कशन है उसका साथ साथ कंटेम्पोररी जुडिशियल डिसीजन क्या है, वो संजोग करना है. नमस्कार. बिल्कुल आपने सही बोला. यही बात है कि जब भी कोर्ट का रूलिंग आता है वो हिंदू धर्म के लिए आता है. और आप सोचिए कितनी गौ माता का हत्या हो रही है, उसका तो कोई नहीं बोल रहा है आज तक. किसी ने बोला है? किसी ने बोला है? और इसमें तो गोधन का अगर हिसाब करें कितना इकोनॉमिक लॉस हो रही है. और ये जो परंपरा है हमारा, अभी जो मुस्लिम परंपरा है वो तो 1400 साल का है. हमारा ये तो पता नहीं कब से चल रहा है. जो कलकत्ता हाई कोर्ट का नहीं, त्रिपुरा हाई कोर्ट का था, उसके अगेंस्ट में तो हमारी त्रिपुरा सरकार ने अपील करी है. और उसमें कोई एनिमल एक्टिविस्ट, पेटा,
क्या वो है ना पेटा पीपल अगेंस्ट समथिंग समथिंग भूल गया, वो पेटा पुटा जो भी है, वही लोगों ने ये कोर्ट केस किया था कि उसका जो है भय डर इस टाइप के होते हैं और उसका सैंक्टिटी ये वगैरह नहीं रहता है। और उसमें ये भी कहा गया कि जो लोग जाते हैं उसमें बच्चे भी जाते हैं, ये भी जाते हैं, तो वो देख के डर जाते हैं, उसके लिए उसको जो है करना नहीं चाहिए ऐसा। उन्होंने उसमें एक बात बाकी जो सब्सिक्वेंट रूलिंग में कहा था कि उसको एनक्लोज्ड एरिया में करना चाहिए ऐसा करके। तो उसी को मानते हुए त्रिपुरा सरकार और ये जो हमारी 2 जगह पे हो रही है, माँ त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है और 14 देवता मंदिर। 14 देवता मंदिर 1 साल से बंद हुई थी। मैं इसमें आउट ऑफ ये वाली फेथ का थोड़ा सा बता देता हूँ। ये रूलिंग आया था सितंबर महीने का 2019 का, मे बी अराउंड 27 का ऐसा कुछ। जब ये बंद हो गया, इमीडिएटली बंद कर दिया, तब हमारे लोगों ने, हमारा परंपरा जो बुजुर्गों ने और वहाँ के जो पुजारी ने कहा था, देखो ये जो कर रहे हैं ना, इसके भुगतना पड़ेगा, इसके परिणाम बहुत बुरा होगा, ये बोला था। लेकिन हम लोगों ने सोचा नहीं, समझा नहीं, क्या होगा क्या होगा। क्या हुआ 2020 में हमने देखा, 2019 का दिसंबर से शुरू हो गया कोरोना, और 2019, 20 और 21 2 साल हमने उसका परम ये देखा। तो उससे पहले फूडसी किया था। जो वहाँ की जो चंताई है, चंताई इज सपोज टू बी द हाईएस्ट इन द ऑर्डर, इट इज़ लाइक ए किंग का जो बिशप है उसका स्थान है। तो उन्होंने कहा था और हमारे जो बुजुर्गों ने कहा, ये जो बंद कर, ये बहुत बुरा हुआ, इसको कभी बंद नहीं करना चाहिए। ये इतना साल पुराना है। और इसका जो है पीछे उसका थोड़ा सा इतिहास में भी बोल देता हूँ। 1980 में जब जातीय दंगा हुआ था, उसमें त्रिपुरी और नन त्रिपुरी के बीच में, उस दौरान भी इसको ना कुछ दिन के लिए बंद करना पड़ा था। बंद हो गया था, मतलब जो पुजारी था वो तो ट्राइबल होता है, वो भाग गया था। उसके बाद तो उसको प्रोटेक्शन दे के गवर्नमेंट का, मतलब आर्मी, BSF, CRP और बंगाली लोगों ने उसको लाके बोला नहीं, पूजा करना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा और प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये वाली है ना, हम लोग कहते कि क्या है उसमें बलि में क्या रखा, ये रखा, तो ये तो सच है, ये त्रिपुरा के लोग जानते हैं। और ये तो जो हुआ कोरोना का, तो ऐसा नहीं है कि हम कोर्ट को नहीं मान रहे, कोर्ट को मान रहे, कोर्ट को मान के ही हम कर रहे हैं। और दूसरी बात, लोग इसमें कोर्ट में कह कि लोग डर जाते हैं। डरना क्या है, और जो डर रहे तो उसको मत जाने दे। अगर हम मुस्लिम का देखते हैं, मुस्लिम लोगों का मैं उस टाइप से इसीलिए कह रहा हूँ कि वो अपना छोटे बच्चा 5 साल का 6 साल का बच्चा, उसको लेकर गाय का उसमें चाकू दे के उसको कटवाता है कि काटो उसको, और वो कैसा मर रहा है उसको दिखाता है। और हम लोग तो एक बकरी काटना या एक मुर्गा काटना उसको भी डर रहे हैं हम लोग। हम तो इतना हो गया तो आजकल कॉकरोच से डरते हैं। तो इसीलिए मैंने यही सोचा था, नहीं हम लोगों को ये करना है, मैं अपना बच्चा को लेकर दिखाता हूँ ऐसा होता है। अदरवाइज हम लोग तो वो भाग जाएंगे। इसीलिए अल्लाह अकबर सुन गया तो बस अपने उसमें चला गया, वो चूहा का वो ढूंढता है कहाँ छुप जाए। तो ऐसा नहीं है, मैं तो इसका पक्ष में, मैं भी पहले नहीं था। आई माई सेल्फ डोंट टेक मीट, मैं वो वर्जिन में, मैं बहुत साल पहले मैंने छोड़ दिया। लेकिन मैं लोगों के लिए कहता हूँ, जो कर रहे हैं उसको मैं करने के लिए मैं कभी भी मना नहीं करूँगा, ये मेरा विश्वास है। Thank you, sir. Any other questions, please? We should have got what it was told ki how the northeast can be involved more with the mainstream. We can have a program in which there will be local involvement of local chieftains and the local people along with a translator. If that is done, what they want to convey, it will come to the mainstream. मतलब लोगों के अंदर क्या बोलना है, अपने आस्था के बारे में जो बोलना है, अगर कोई जो सामान्य भाषा के माध्यम से अगर कोई समझाने लगेगा तो लोगों को और अपना लगने लगेगा। तो एक है। और एक बुक का मुझे एक रेफरेंस देना था, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका एक बहुत सुंदर बुक है, एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर। इसमें बहुत सारे पंथ, बहुत सारे नदी की पूजा के बारे में, नदी महा के बारे में बोला गया है, इंद्र महा के बारे में बोला गया है, ऐसे बहुत सारे नाग महा के बारे में बोला गया है जो नहीं थी, जो उन्होंने बहुत रिसर्च का काम करके उन्होंने किया है। ये 2 चीज़ें मुझे बोलनी थी। लोकल इन्वॉल्वमेंट तो विथ ट्राइबल पीपल स्पीकिंग विथ अ ट्रांसलेटर, सो हमको समझ में आए। यस, धन्यवाद सर। Okay. Thank you, sir. Next question, please. Namaskar to all. It's not a question but a suggestion, since we have many learned persons who are experts in the culture and history of the Northeast. In our discussion yesterday, particularly with
Agastya Swami, it was quite clear that just as the Gauda Desha has been the center of Nyaya learning, Kashmir for aesthetics, Varanasi for Dharma Shastra and Vyakarana, undoubtedly it is the Aishanya Bharata, the northeastern states that we today know as Ashtalakshmi. They have been the center of tantric learning. So I consider it as my dream or my desire, and I request all the learned persons here to coordinate with the authentic tantra experts here and develop this region as a center for tantric learning, as we know that most of the tantric practices are being diluted or being lost today. So that would be, through this Sammelan, I would like to request all the scholars and devotees and practitioners of Tantra to make some efforts to at least some small steps in this direction towards training aspiring upasakas or sadhakas in authentic tantras. Thank you. Thank you very much. Any other questions? We'll continue the questioning session for 5 minutes more. After me. So my question is to Rami ma'am. Yeah. So you said that we have to establish the correct civilizational narrative, which encompasses the Northeast eventually. So especially in the context of this Sammelan, I mean, what more efforts do you think are imperative so that we can expedite that process? Like I said, the second challenge. The second challenge is to establish tools. You know, we are lacking rigor in our scholarship. I'm not saying we don't have the intelligentsia. I'm not saying we don't have the scholarship. You know, some of the brightest minds, the philosophers, have come out of this country. But modern education depends on colonial subjects. Colonial subjects look at us from the point of the other because they were studying us as, you know, natives, right? We need to create our own frameworks. We need to create our own theories. One of the other things that I find lacking is a really international standard literature. You see, what happens is that, it's a trickle-down effect. You know, when the international community accepts something, unfortunately so, it trickles down to us and we think, there's some veracity to it. A lot of people might disagree with me, but the point remains that unless these books are referenceable, unless we can refer them in journals, we can refer them in articles, we can refer them in other books, it remains limited within our circle. So I think creation of our own lenses is very important to, establish this continuity. And of course, discussions and deliberations like this. We might not have all the answers, but I think these are very important, and these are important to decentralize, not have them in Delhi, have them here. It gives an opportunity for people to come here, and I think that is very important. The more people that come here, familiarity makes you feel closer to people. So I think a couple of these areas are things that we need to strengthen, and we need to realize that this is where we lack a little bit, and it's all right, Does that answer your question, though? Thank you very much, ma'am. Okay, I'll take this last question. Okay, ma'am. This is just to add to the Manipur part. I'm a Vishnupriya Manipuri. We pay obeisance to Apokpa. He is the 7th generation from Chitrangada and Arjuna. And before any auspicious occasion, we pay obeisance to Apokpa. And Apokpa rests in the granary of every home in the villages. And in the cities, if there are 5 to 6 generations of families staying in different parts, then the head of the family, they will have the Apokpa, and we all gather together to worship, to pay our obeisance every year.
And this, the Apokpa, about Apokpa, we find mention about him in the Kumul Purana by Navadip Singha. Okay, last question. Okay. Thanks. I'm Dr. Bhavarth from Maharashtra. I would like to tell you that really this was a very nice eye-opening session for us. Only two things I would like to attract your attention towards it. One thing is that, as sir rightly said, what we need to do. I have been a part of PEN International, which has a headquarter in London. So ma'am might be knowing it. It is the community of the poets, essayists and novelists who are totally leftist, the left movement that they run. And it is an international organization. For this, if we want to really promote this, I think there should be an organization which directs us towards the right part of it, the rightist thing of the writings that we do. And in the whole world, I don't think so that there is any organization which looks after the right thoughts of the rituals and the other things which are involved into the literature. So this can be one thing that we can go ahead with. And the second part, what I want to ask you is, when we say about the Bali Pratha, I would like to tell you that if we say as a philosophy in theology, there is a very important part which is of philosophy. And in this philosophy, we say that his samasta hi Shri Vasudevo, aisa pratiti jayacha otala bhavo. If we say the entire world is occupied by the name of Vasudev, that is Lord, then is it a right thing to slaughter someone who has the ansh of Bhagwan? It is a first part that I would like to ask. And second part is, yes, definitely one is going to get demolished. Atma is Satya. But Mauli says, Jaise jirna vastra sandije, maga nutana vedije, taise dehantare svikarije chaitanya nate. When someone is old, which is retired from the due course of actions, then only it goes into the other mode. So when we give a bali, are we going to ensure that the someone who has been given as a bali is like a old shirt that is torn or that is crumbled after the complete usage, and ensure that it is not the clean which is ironed shirt, right? So these are the two things which I would to ask you, and I think you can give me the answer. Thank you. Thank you for questioning. Actually, if you go on discussing or debating the fact, this is highly spiritual. If you go to that level, ekam sat vipra bahuda badanti, isn't it? और हम अगर अद्वैतवाद में अगर जाते हैं तो दुनिया तो एक ही है, खाने वाला और जिस चीज़ को खा रहा हूँ और जो खाने का पद्धति वो चीज़ एक ही है. सो एक दूसरे को खा ही नहीं सकता, हम तो एक ही है. अगर हम हाईएस्ट स्पिरिचुअल में जाए उसमें, फिर उसमें खाने वाला भी नहीं है, जिसको खा रहे वो भी नहीं है, जो खाने का क्रिया वो भी नहीं है, सब एक ही हो गया. तो उस हिसाब से अगर देखें तो इट डजंट मैटर. और अदरवाइज अगर हम साइंटिफिकली अगर हम दूसरी तरीके से दें, हम अगर चावल भी खा रहे हैं या गेहूं का भी हम आटा बना के खा रहे हैं या और भी कोई भी सब्जियां खा रहे हैं, तो उसमें भी तो जीव है. अगर हम देखें तो एक दिन का हमारा अन्न का जब भोजन हो तो उसमें तो हजारों चावल या गेहूं का उसको आटा बनना पड़ता है और चावल बन, क्योंकि वो तो हमारा खाने के लिए तो नहीं बना था, वो तो अपना प्रजनन के लिए, अपना वंश वृद्धि करने के लिए आया था. जो भी चावल बना, चावल का जो बीज है वो अपना वंश वृद्धि करने के लिए आया, या जो भी आटा का जो गेहूं का है वो भी तो अपना वंश वृद्धि करने के लिए तो आया, वो हमको खिलाने के लिए नहीं आया. तो उस हिसाब से अगर हम वेजिटेरियन भी हो रहे हैं, ये मेरे कॉन्सेप्ट है, आई मे नॉट बी अप्रोप्रिएट व्हाट यू आर थिंकिंग, लेकिन there is an expert. Yesterday we have discussed about this matter of Bali. Augusta ji, you have a very nice explanation about the Bali. You say you are like sad that the only temple in Kerala has stopped the Bali, but when you come to Kamakya, Kamrup Kamakya, you said there is Bali. Bali is very much more than Assam. I think it is here in Tripura.
So can you explain the spiritual connection and the tantra part of this Bali? I think he's expert in this thing. Your explanation is too good, but I just want to add him in to support your view. So this is what I feel, because other than that, I am not a expert in the spiritual or religious context. So this they can supplement. Pranams everyone. So something about Bali we have to understand that if we talk from a Vedic point of view, it is a different thing. Bali is a highly tantric ritual. Only a initiated person has the adhikara, patrata to give a bali. Whereas even the Pashu who is selected for the bali, it is said that he should be an initiated. Just before the bali, if you go to Bangladesh, there is a temple of Bhadrakali. However, the Vigraha is of Dakshinakali, but the Pratishtha is of Bhadrakali. The goat is brought near the Vigraha. The Archaka chants the Mula mantra in the ears of the goat. See, what happens is when the mantras are passed, there is no difference. That is the reason I think, so I didn't remember which. I think so yesterday only we were talking about nyasas. What is nyasa basically? Touching your body parts. You invoke the Devata yourself. So if in case I am doing a Durga mantra japa, if I am saying Dum Angushtha Bhyam Namaha, Dum Tarjani Bhyam Namaha, all these points in my body, I am invoking Durga. So then who is Agastya? Who is Durga? It is just Durga everywhere. So when the bali is given, it is not the Pashu there. It is that Bhagavati there. It is the Bhagavati here. And even that Pashu is Bhagavati. So who's died? That is the reason it is important for us to understand, do not ever mix Vedic rituals with Tantric rituals. If that is done, it will be not wrong, it will be just misconception, and which will lead to a lot of misunderstandings, and then it may cause some problems. So I very clearly support Pashu Bali, but the only condition I kept, the person giving the bali should be yogya. He has to be initiated. It should not be like, aaj humne bali diya, kal biryani banange wahi kha lenge. There is a very precise vidhana. As soon as the bali is given, his body should be taken back. Only the Munda Arati should be shown. His body should not be left there. With the back, पीछे जो दो पैर होता है गोट का, उसको लेके ही जाना है. He has to be cremated properly as per all the vidhanas. There are so many things about Bali which can be spoken authentically with all the Shastra Pramana. That is the reason we are in Bharatavarsha. There is too much of differences, yet it is beauty. The only thing is we have to understand that there is no such matham which is superior, no such matham which is inferior. We have to just have that unity, and we need to have understanding कि if I am a Shakta Sampradaya, Shakta Sampradaya se, it will never make me less of a Shakta if I say Krishnam Mande Jagadgurum. So, हमें क्या है देखो, I remember the words of Velakudi Swami that you may be a Shaiva, I may be a Shakta, but that is in your home. The moment you are stepping out of your home, you are just a Hindu. That is the reason. So I request everyone that you all have to be Hindu. Support, if you are not supporting, very good, but you need to have a clear idea of what is that pratha. Until you are not aware about what is Bali, you cannot be against Bali. You can just say that मेरे लिए ये गलत है, ये सभा गलत है, वैसा नहीं होगा. That is the thing. Okay? धन्यवाद. Yeah, absolutely. Just a word, Vedic Bali is again Pashubandha, which is there for Vajpayee Yajna. There is Pashubandha, which is practiced in the Vedic. Again, the Pashu is initiated with Varuna mantra, and then it is given. So Vedic is there. Vedanta philosophy has evolved later, where all these concepts have evolved. So Vedic and Tantric go parallel to some extent. I suggest to arrange one conference on Bali. Just adding a few words to what both of them had spoken. As Dr. Sridhar pointed out, the Bali Pratha is quite similar to the Pashu Bandhana or Pashu Adambhana.
which has been a part of Vedic civilization. Of course, that is debatable. There are opinions that they were included later and all. Let us not go into it. But as Agastya ji had mentioned, we must not take it as a compulsion, but rather as a regulation. So just as I wouldn't get political, recent years, may one of the popular CMs from one of the biggest states had brought in a new law which made cow slaughter. It did not expressly ban cow slaughter, but the restrictions were such that it was practically a ban on it. If you remember, I don't remember the year. It was in his first term. Of course, there were a lot of protests against those criticisms and protests, but that regulation has been reflected even in the Bhagavata Purana, where it is said that these laws, the practice of eating meat which is offered, as well as copulation, consummation of marriage with one's wedded wife, were actually intended only to regulate man's desire for kama as well as for mamsa bhakshana, restrict it rather than recommending it. That was the idea, similar to Parisankhya Vidhi in Purva Mimamsa, that is called. It is not an express permission, but a way of getting things under control. That is khalo, lekin only that which has been offered. Thereby, there is some regulation into it, which corresponds to what Agastya ji mentioned. Only the adhikari can do it. For an adhikari, it is not gratifying himself, but the goddess. So one should not mix up meat consumption, bali, and pashvalambana and all these things to be synonymous. They are all entirely different. Bali, again, many of our Puranas expressly state that the pashu which is offered as bali gets moksha. Let us not have any doubts about that. Whether supporting or no, the same Vyasa who has written Bhagavata Purana propagating ahimsa has written the Devi Bhagavatam also. He cannot be accused of being hypocritical, but a broad-minded saint, a broad-minded Maharishi, a Trikaladarshi, Rishi means a Trikaladarshi. He was so broad-minded that he would accept the Bali Pratha also, he would also accept the ahimsa. And that is the true spirit of Sanatana Dharma. And we all should emulate Bhagavan Vedavyasa. Thank you. The cult, Vaishnav cult, they don't believe in sacrificial ceremonies or Bali custom. In fact, they strongly oppose the sacrificial ceremonies, as they have said, Shendari Hendari Daivate, Koni Pujati Bhute Khete. So they have strongly opposed these sacrificial ceremonies. As far as not only in Maharashtra only, but all over India, the Vaishnava cult, or colloquially known as Bhagavad cult, they never encourage any sacrificial ceremonies in due course. And even today, in most of the states, they have banned these sacrificial ceremonies, just like the Devdasi cult. It has been banned by the government and some progressive institutions. Just like that, these sacrificial ceremonies, they are being looked down upon by the Vaishnava cult or Bhagavad cult, not only in Maharashtra but all over India. Though the Bali has not, means sacrifice is banned or it is not entertainment, but without the official or Vedic sacrifice, the people who are eating non-veg, that number has increased to which we cannot imagine. So we have to take the cognizance of this, that very rightly Shriram ji has said, कि कुछ भी खाओ लेकिन उसको मंत्रित करके या उसको कुछ ये करके उसको भगवान लाइक नैवेद्य, व्हाट वी कैन से. हाँ, नहीं तो वो एक हम देख रहे हैं कि ये सब हमने बंद कर दिया. हम पुरोगामी हैं, महाराष्ट्र सबसे बड़ा पुरोगामी है, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काट छाट हो रही है. तो वी हैव टू टेक द वास्तव का भान होना चाहिए किसी भी चीज की, बिकॉज बीइंग अ मॉडर्न और बीइंग अ
in the era of this wokeism, हम लोग जो we are trying to become modern and modern and modern, हम गधे ही बन रहे हैं, हम पशु ही बन रहे हैं. So we have to understand this and we have to be उनकी बलि दे दो, that is good. Hindus should come ahead and give the बलि of all others. That is a very nice suggestion. But I think अहिंसा किसी भी चीज का अतिरेक होना यह समस्या का मूल है. और अगर हम भगवान शंकराचार्य को जानते हैं और अगर हमको अद्वैत सिद्धांत का थोड़ा भी हमको कृपा हुआ है, सो ऑल दिस नॉनसेंस क्वेश्चंस विल नॉट कम. So I think that is means learning is inside, not outside. Debating is very nice, but anubhuti is the most required thing. Thank you very much. अनुभूति is that because बलि प्रतिपदा. एक मिनट जस्ट कैसे है हम सब है ना, वो जो कलोकियल लिटरेचर लिखा था ना, वही सब पढ़कर बड़े हुए, बराबर है. अब हमारे जो पूर्वज थे जो करते आ रहे हैं, बलि दे रहे हैं, बलि कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली इट कम्स टू अस बिकॉज ऑफ आवर ट्रेडिशंस. ओके, बट आफ्टर गेटिंग नॉलेज इट इज अप टू यू whether you have to continue that or you have to stop it. So that freedom is in Sanatan Dharma, Hindu Dharma. Is it? So I believe this, I don't know his name. Salvation is not only with us. It is also with us. Once we understand this, so it is better we will have a developed and good society. Thank you very much. Protocol matters because one senior judicial officer is there, so he wants to conclude, so he wants to pass a judgment, final judgment over this debate. Criticize the judiciary. Okay, no, I'm not on that. Criticism of judiciary is very welcoming, but I'm here to say that this is the beauty of this platform. We are belongs to various sampradayas. We are united here. Look, what I learned is that the information, the knowledge is so much, so vast. And what our gurus says, the information which we have, even what is written by the Vyas Muni, is only 2% what is in the globe or what is in the planet or Brahma. So when we turn inward, we'll get all this. We should not guess such questions if we follow the faith truly and go inwards. Right? We have the mind, we have the conscious, we have the Karandeha, Mahakarandeha, like the planet, the Brahma also has. If we uprooted all this, what I say, our Karandeha, our Buddhi, our Aham, then we can connect with the planet. And the moment we connect, we got enlightenment and we get all the information, knowledge through ourselves. We become the transformers. That's what we have to do. We have to do the spiritual sadhana. We have to tread that path and enlighten ourselves so that all the questions can automatically vanish. And we go ahead and we become, someday we become a Santa. That is the path of this spiritual journey. And we have to attain this so that all these questions can disappear. Thank you. Thank you very much. Next session is felicitation program, and I would like to request Dr. Sriram Narayan Swami to felicitate our honorable persons on the guest. To start with, I'd like to request him to felicitate our moderator, Gautam Mishra ji. ठीक है. Thank you very much, sir. Next, I would like to request Shri Shandeep Kavishwar ji to come forward and to accept the felicitation. Okay. Now I would like to request Professor Shukadeva Sharma to come forward and to accept the memento and the gifts.
Rami ma'am to come forward. Next, I would like to request Dr. Atul sir to please come forward. Thank you very much.